Yeah, so good afternoon, one and all, gathered in this Zoom meeting as well as through YouTube for this flagship program, that is NEP Orientation and Sensitization Program launched by the Ministry of Education and run by the Sant Gadge Baba Amravati University Malvi Mission Teacher Training Center. I warm welcome you to this virtual platform. Friends, as you know that, as you very well that there are 8 different themes, and one of the theme, that is information and communication technology. Ministry as well as our curricula has pay more emphasis on this technological integration in our daily teaching learning, not only daily teaching learning, in our research, in your daily work, because e-governance, digitization, most concepts are coming in recent era, and nowadays our classroom has become a blended teaching learning mode. So some of the challenges are also there because infrastructure and number of things, but it is very essential that we should integrate this ICT in our daily teaching learning. So for conducting this interactive session today, we have with us a very great and eminent personality, Dr. GM Nasira ma'am. Ma'am, warm welcome on behalf of the Malvi Mission Teacher Training Center, Sant Gadge Baba Amravati University, to this flagship program. Friends, Professor Nasira Madam is presently discharging her duties as an Associate Professor and Head in the Department of Computer Application at Chinkanna Government Arts College, Tirupur, that is situated in the Tamil Nadu. Ma'am has more than 27 years of teaching as well as the research experience in UG and PG both. Her area of specialization is the artificial neural network and the data mining. Under his able guidance, 16 PhD students have completed their PhD research, as well as 3 are ongoing. She has published more than 125 research papers in national and international reputed journals, and she has also written the 3 books. She has also completed the one minor research project. There is a one patent on her credit. She has also received the 6 and 7 different awards in various categories, for the best teacher awards, then best paper presentation awards, best departmental awards. This is a brief introduction with regards to Professor Nasira ma'am. She is very popular for conducting such kind of interactive session on the ICT, and her session was very well received from earlier batch of the participants, because ma'am has given the hands-on training also during her session, based on the AI enabled research tools, as well as the AI enabled teaching the learning tools. So ma'am, I will not take much more time. We are eagerly waiting to hear you. I again warm welcome you to this flagship program and request you to start with your session. Ma'am, please. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you for a detailed, resume, I think. I think once you can put your video on, if it is possible, if you could. Maybe. Hello, ma'am. So can you switch on your video if it is Ma'am, possible? one problem is there. Actually, they are showing my video, but the camera is not available here, ma'am. Acha. No It is. issues, sir. No issues. Maybe in. Okay, sir. Thank you so much. Thank you for your intro. And let me start the session with your permission. I thank the Vice Chancellor of the University, the MHRD Director, Dr. Atik sir, Mohammad Atik sir, and all my dear colleagues and my friends who always who take me as a part of this program. I'm very happy to meet different participants, my dear colleagues, faculty members from different discipline, where every group I find that the recipients are always in a happy mode to receive something which is always keeping us updating. So keeping us updating means we always think about not only the digital era, we always think about teaching itself is keeping us updating. So that is why we are always in the learning process. It's a continuous learning process. So now, since we are in the digital era, I hope I am audible to everyone. If there is any disturbance with my audio, kindly you can let me know so that I may correct it from my side. I'm Dr. Nazira.
as I was introduced. I always feel it privileged to meet the participants meet anyone, not participant. Even I am a participant most of the time, to meet people and to get ideas from them. So as the introduction was made, I am from a computer background. I am comfortable. Otherwise, also I keep comfortable with what I'm supposed to learn. So in this regard, now we will have a give and take teaching or learning about this ICT. I think most of us are aware of this ICT because after this COVID, everyone are urged to come or get blended into this information communication technology. So any technology, it is not that ICT is only for a computer domain. No, that is not at all right. It is not only for an information technology domain. It is not at all. Information communication technology says that it is a platform where we are trying to process our information and share our information in a proper way, in a proper time, without any loss of information, in a quick way, and in a way where in a method where the stakeholders, our own students will receive it and they will also remember it and apply it wherever they use it. That is what we call it as information technology. Even to our surprise, even a television is an information, it is a communication technology. Even our radio is a communication technology. And now everybody are with a smartphone, and everybody know to download a particular app or to update the software of our mobile phones, or to send something through WhatsApp or Insta, or to post something in a Facebook. So everyone have become well versed, and that change has happened among everyone, particular in the teaching within the teaching community, because of after this pandemic situation. We were all bounded. We were all bounded. We were all obliged to share and receive the communication through some technology. So through some technology, maybe we were doing it through a mobile, through a WhatsApp, or we were doing it with the Google Classroom, or we were doing it with some other app where the pictures were very correctly reaching, some Telegram app where their email was there. And even now, all are, whether it is a private or a government one, all the communication now it has started coming in a digital mode. The circulars are coming in a PDF format. And any details the administration is asking from us, they're asking us to fill it in a form of a Google Sheet. They are creating online forms, Google Forms, whereas we keep update ourselves with the information what it is asked. So everyone should know how to receive the data and how to send the data. So though many of us are a doctorates, we have written a thesis, we have published papers, we have done our presentation through a PPT. We have done it, either we have created of our own or we have taken somebody's help. That is what. That was in the development of a professor. Now, towards the student, towards my class, if I take any zoology or a geography or a mathematics or a physics, my student is in a receiving mode, whereas he is depending only on the digital era. Then I write it on the blackboard. My student want me to give it in a form of a picture, post it in form of a PowerPoint, give it in a form of a PDF, give it in a form of a Word document. Not only text he is interested with a content which comprises of a text, which comprises of an audio, which comprises of an image, and which comprises of an animation, all these. So now we have started making of multimedia content than only this word content. We have started making of this multimedia content. So how do I make this multimedia content? There are plenty of online tools, applications available in the website, which is all of open source. Open source. We need not to cost for it, and it doesn't have a expiry time also.
So all these are big plus in this information communication technology. I'm not going to cover the entire thing. I will just tell you what is what available for what purpose. Maybe you can exercise it when you are free, and you can show it to your student, and the student will also further learn. As we all know, as we all have smart mobiles, we have smart students also, because they wanted us to give something very smart, not in the traditional mode. If you don't mind, let me mute my video and yeah. Yeah. So I hope my slide has changed. So let me first tell what is an ICT. ICT is nothing but it is encompasses of all electronic gadgets. All the electronic gadgets which are dealing with processing of information. The purpose of processing for information is for better and effective communication. So that is why people are talking about ICT in education, because everybody wanted an electronic gadget which will process my information in a better way and an effective way. Particular in education, this communication process takes place between a teacher and a student and a management and an administrative personnel, where plenty of data has been transformed, stored, retrieved from one place to another place, from one place to another place. So this has been done with all the electronic gadgets which are readily available in the market. All these electronic gadgets, it deals with both hardware and the software. Like if I go for a television, I call it as a hardware, a radio is a hardware, a computer is a hardware, and an overhead projector is a hardware, and LCD is an hardware. But all these hardwares definitely require a related software which does the purpose what I really need it. So in general, I can say that ICT is mostly focusing on the various computing technologies for processing the data. So in particular in education, and we can say in even commerce, e-commerce, trading, even in a when I go for a class, a geography class, if I say a globe, the student may be in a surprise that what will be the form, how it looks like. And when I incorporate a video into my slide, and when I show them, then this is what a globe, this is the map says, and this is the area what we have, the student gets interested and gets attracted, and it gets into the memory in a fast way. So in education, ICT is playing a very important role. As I told you, one is that is transforming education, leveraging information and communication technology for enhanced teaching and learning, and it helps in quick access of information. So and the information is available easily in an updated form also. For that only I'm just showing this slide, where this slide it comprises of the various AI tools and application. Before telling what is an AI, I just wanted to just show you a web page where you have various AI tool and what will be their applications. Let me go to the link. And the advantages continues with an ICT. It is easily available, updated data is available, and this data, the updated data, where I can get what I can get is in any geographical area, I can get from any geographical area, I can get the data. For example, suppose if I go to my Wikipedia, if I go to a Wikipedia website, wikipedia.com.org, where this Wikipedia is not only a four wall of an educational institution. It is a globally, this Wikipedia has got the data from the entire universe. So when I show this data to my student, the student has a divergent thinking. The thinking ability of my student is improving because it is giving me a global data. It is giving me a global data. So global data is not one particular data where, or it is not a view of one particular domain. It is a view of different domain. So here I'm facilitating my student
in learning in a global way. Though I sit only in a four wall of an institute, through this ICT, I take my student to the different part of the universe, and I teach them, see, this is what here it is available, this is what this data is available. Let it be anything. I go for a mathematics, I go for when I teach something about cooking, when I teach something about drawing a graph, when I teach something about drawing a picture, developing an architecture, drawing a picture of an animal, there are many tools available. So for all this, I am teaching my student, these are the ICT tools are available where you can use all these online tools, you can learn, and we can have a good higher knowledge about it. Suppose if I tell about a formula, or if I tell about a program in terms of computers, if I say that write a program to add two numbers. Like if I just tell, the student will write only a program of 4 lines to add two numbers. I have various websites where I go. W3 Schools is a popular website to learn any topic of computer science. W3 School is a popular website. So like that, I have different wide range of communication websites which helps my student in learning the process in an updative and collaborative. And here individual learning is also taking a big part. When I give a link to the student, I'm just giving a link to the students. I'm taking a topic here about maybe about artificial intelligence. I'm giving a link to my student. I'm saying just go through this link, see the content, you make your own assignment, or you make your own PowerPoint presentation and come, and you add some graphics into it, and you add some coloring into it. All this in a chalk and board, I cannot do it. I can do this only with the help of a ICT technology or an ICT tool. Now my student is learning how to type the text, how to make a graphic, how to blend it with an audio, and how to collaborate all this and make a PowerPoint and present it with the help of an LCD or an OHP. So this way of ICT teaching, the same topic when I teach it on a blackboard, maybe I may teach it only that particular topic. No other branches of the topic I cannot explain. I can just write it on the blackboard. Some topic, maybe a grammar or an English, or some I can just write Shakespeare. But when I do this Shakespeare topic in my ICT enabled classroom, I show the Wikipedia of this Shakespeare. I show the picture of the Shakespeare. I will show some videos of the Shakespeare, and all this, some or the other mode will reach the student. Even if the student is not concentrating on the text part, even if the student is not concentrating on what I write on the blackboard, definitely the picture of the Shakespeare will get into the memory of my student. And the Wikipedia, some history about Shakespeare will reach my student, and the student gets attraction and remember and has a drive to learn more about Shakespeare. So when I show that this is the Wikipedia of a Shakespeare, once my student was saying, can I make my own blog? Yeah, of course. You create your own web page. It is available on the Google. It is on the net. It is available. You can make a free web page of your own. So that is how even I have made my own free web page. I think most of us will be a PhD completed professors. So in that case, everybody, we would have definitely enrolled ourselves into a Google Scholar. So whereas this Google Scholar only tells us about the publication, as I had an introduction. Okay, so these are the wider range of catering need
or catering purpose for my student. So you have more to tell about why ICT. So instead of rather telling why ICT, let me go and give you some demo, because all this history, when it started in 14th century, 16th century, 14th century, I had only little manuscripts. Maybe in 16th century, all my manuscripts have been converted into textbook. In 17th century, it has come into pictures, and in other centuries, it has developed into other forms. All these are history of ICT. But still now, some of us are still sticking only on a chalk and board. We carry a textbook with us. We write the topic on the blackboard. We just go teach what we have come prepared. We ask a question here and there. That's all. But this is not required. This only is not required for the young generation. The young generation is expecting something more from us. Maybe he is expecting in form of an audio visual aid, in form of an other material, because we have taught them in this pandemic period, we have taught them to write an assignment in a Google Classroom, to submit an assignment, and we have made a Google meeting where we have asked them to post their comments. Everything we have done of our own, we have taught them. And suddenly, when we come back to a chalk and board, now that is why students in many colleges, we are finding the students' attendance is less, the students' interaction is less, and the student academic performance is reduced. But so that's why this NEP has brought into many changes, even in the school, even for the school children from class 5, if I'm not mistaken. From class 5, the student is asked to learn about all the ICT communication technologies, including a programming language, where you can write a programming language to find a solution for a program, for a problem. So this NEP, this new NEP is focusing on that. So we will also have to keep ourselves updated, otherwise we go outdated. So updated in the sense, I don't insist everyone to do something on a MOOC, to do something or to post some videos or ICT enabled e-content in a Swayam. Maybe most of us, I mean, at least few of us would have done in MOOC. Few of us would have done some content for Moodle, of course. All these are required uh, platforms, which is for online learning, blended learning. That is what as sir was telling, we are in the blended learning, not only chalk and class. We go for a mobile, we go for an ICT, we go for a, even you go for, we go for a library. There is a library there and there's a digital library also. I'm sitting here, I'm just accessing all the text material which is available in my UGC Sure Ganga. When I write my thesis, I type my document either in a Word document, or most of us do it in a latex. But I'm very sorry to see that everyone wanted to do only in Word document. But latex is such a word processing document, whereas it helps in embedding so many things in our text. Only word processing means you can only do some text part, you can align the text part, we can make a font out of it, you can change the color of it. But latex is something which is new and which is also user friendly, where it is giving us and aiding us in making sense to the data what we have incorporated. So with this all this few, so once again, I, even for my own self, I put a request that information technology or an ICT is an activity which is 100% required for a faculty member to meet the student need for the purpose for which they have come as for an education. It doesn't mean that only computer people have to go, even physical director, even library, even all life sciences, even a costume design, even a commerce person. Everyone are in the terms of IT, ET, CT. All the terms are coming into one umbrella where we'll have to use, we'll have to practice, and we'll have to get into this. So when I come to the psychological principles of an ICT, as a learner, as a student, some of my students
have different needs or different takeaway. One student may be interested in listening my lecture. One student may get bored with my lecture and wanted to go with the video kind. One student wanted to have an audio kind. One student wanted only to watch only my text part. So all together putting, I can bring it into an ICT. Okay. Now let's come to the before going to the AI tools. I think had anyone prepared some content for MOOC? Okay. So MOOC is actually anyone has done MOOC tools for MOOCs? It's a massive open online course platform actually. MOOC, MOOC, Yes, ma'am. maybe. I Yes, sir. have done. You have done. Sir, you have done. That's nice, sir. That is good. Because many of the education institution, they insist us, and we also do it of our own. See, MOOC is maybe, I think I have gone to a slide where this is an example of, uh, is the slide completely visible? Is the slide completely visible? Because here I am, yeah, okay. Is my slide changed? Can anyone reply? MOOCs. Is it visible? Excuse me. Is my slide visible? Yeah. Yes, ma'am. Yes, madam. Yeah, Example of sure. successful implementation of information. That slide is Information visible. in teaching and Yes. learning. Thank you, Okay. madam. Yeah. Achha. So this initiative, these are few examples. The first one is OLTC, one laptop per child initiative. As successfully provided, many governments have given a laptop for a child from the school education. The purpose of this is to create more learning opportunities. So from there only actually MOOC has started. MOOC is it is a massive open online course platform which has made quality education accessible to large number of learners worldwide, breaking down the barriers of time and location. This is a very Arti important Deshpande, point. madam. Yeah. Arti Deshpande, madam, please mute yourself. Arti Deshpande, madam, please mute yourself. Yes. Please mute yourself, madam. Okay. Achha. So this is actually this MOOC is a it's a kind of open where you have where you can go and learn open online courses at any time, and the course may be from any location, anytime. Maybe if I find some time in the evening, I go to this platform, I make a content, I learn how to make a content in ICT, and I post a content, and that I can share it to my student. Okay, that is MOOC. And a flipped classroom is where students learn content at home through online resources and engage in discussion and activities in the classroom. So first they learn some content in a classroom at home, and that discussion they do it in the education center. And when when we see about all these are the advantages which I've already told about ICT, maybe let me skip it. Okay. So ICT is almost occupying all the domains. In a vehicle tracking, in a routing, in a supplier management, in a freight auditing, so auditing commerce, in an address system, in an inventory management, a business management, in a bar coding where a EEE or a ECE person can do it. EDAs, electronic data interchange. So in all the fields, almost we have the ICT. A radio frequency where a physics person can learn about it. So these are the various domains. Okay, now we have still come to an advanced where all these technologies are now embedded into artificial intelligence. Artificial intelligence is something, it is very unique. A machine is creating an intelligence of a machine.
is creating an intelligence of its own. How is it creating? As the child does. Maybe if we train the child, we teach the child, see, this is an apple, and this is a table, and this is your pet, and this is your bed, and this is the room, this is your father, this is your mother, this is your sibling. All this, when we continuously train the children every time learns from that and memorizes it. So that memory becomes as an intelligence. Because whenever I show father, the child says, Papa. ये तो मेरे father है, मेरे पापा है. And the child shows, ये तो मेरा pet है, मेरी तो बिल्ली है. Something the child recognizes. So that is happening only when the child learns and memorizes, so that the child trains and recognizes. The child is predicting. And the prediction is always coming positive when the learning is more. The same is happening in an artificial intelligence. When the machine learns more and more, the machine will be able to predict more. Suppose if I give some 10 colors and I train a machine saying that these are the colors. This is a blue color, this is a red color, this is a yellow color, whatever it is. And when I test the machine giving an yellow color, the machine says that the color name is yellow. This is because of the training I've given. So simply creating an intelligence to a machine. And this is used in the all real world applications nowadays. In a metropolitan city, when I travel in a car, in a bazaar, when I cross a supermarket, I don't know, I am getting all the offers of that particular supermarket in my mobile. I haven't entered into that supermarket not even once, but I get the offers or the highlights of the supermarket. Then I just search for the supermarket. It is available either in the left or the right. So how could it possible? Everything is possible because already we have started selling all our data. We are only protecting to open the mobile phone, but we don't know how to protect the information or the data which we are shared or stored in our mobile phone or in a laptop. That is the technology. A technology has got always its plus and its minus also. Okay. So this artificial intelligence, this says that when I cross, it is giving me some, it is just reading or capturing my mobile and it is sending the data. This artificial intelligence is happening everywhere and now even in the field of medical. I've seen in the boards here knee replacement through robotics. So knee replacement through robotics. Now even today my students, my PG students, when they come to a real-time project, earlier they were telling that production management system. Then they were telling about online. Then they were telling about e-shopping. Now everything has changed. Now they are telling that production management embedding with machine learning algorithm. Production management embedding with the virtual reality or an augmented reality with an IoT. So from manual we have come into automated we have come into computerized, then we have come into machine wise, then we have come into the other process, and now we are finally sitting in artificial intelligence. Even when I opened this Zoom link, I think last time whether I have observed it or not, now the Zoom meeting link says that it is AI embedded. Am I right? Am I right? Because my normal PowerPoint or my normal Excel or my normal Word, everything is now AI embedded. AI embedded is nothing to fear about it. It gives me easy method to solve my problem. I want to type a paragraph. Now I'm not doing my typing at all. I'm opening an app. I'm just speaking out. Suppose I want to make a paragraph of artificial intelligence and machine learning algorithms will personalize. I don't type at all. I take my mobile, I open the app, I just give a speech
and that my speech is converted into text and I'm getting it into a form of document. Even today I was doing an accountancy paper. I was supposed to do a model question paper for that. I was doing, surprise, my balance sheet was coming, the credit and the debit part, it was showing a difference. It was drawing all the columns and it was giving me a clear picture about it. That was a real surprise. And the languages, of course, I am from Tamil Nadu, so I am familiar with Tamil. Suppose I'm little familiar with Hindi also. Suppose I wanted to do something in a language, in another regional language with a Malayalam or a Kannada. So the Google helps me in translating my Kannada, my language, my English into a Malayalam or into a Kannada. Otherwise, just see how this was very tough in the earlier days. I have to go search for a Malayalam teacher. I have to go search for a Kannada teacher. I have to give them my script. They will translate and give. I have to come and prepare a notes of it. So all this now it has become with our fingertips, and that is what is ICT. Oh, well, let me just go to, and these are the things. But still, we have some ethical things which we'll have to follow, and we will have to teach our student also, because the student privacy and the data security when using online platforms are very, very important. We were keeping some university examination through online, but what we did is we gave all pass because we were not able to scrutiny, or we were not able to invigilate the student properly, because the student says, when I say put your video on, the student says that no madam, I have some problem in my camera, I was not able to. When I say that you put your audio on, no, I have some problem in my mic. So all these were there. So some data security and the student privacy was missing over there. So, but still we were doing. Okay. So this is one classroom. See, nowadays lab or any technology particular. This is one particular ICT classroom, and this is a SWAYAM course. The student is attending a SWAYAM course. Every student on a PC, they are opening the course module or course content. They are learning something, they are attending the quiz, they are doing some assignment, they are posting their own projects, and this is one ICT enabled classroom. And this is a library where we can see a library where a normal library where the newspaper and the textbooks are written in form of a print form. Here the same content is accessed in form of an e-content. And in education, this integration of ICT has entered or is depending on a Wikipedia, on a Google, on a YouTube, and the other needy technologies. See here, I can say that we have a mic over here, you have a PC over here, and we have seen some smart boards where we can directly, you can write something or project something, and digitally you can erase, and digitally you can even project on the LCD. Okay. And this is one important website where NPTL, as we all know, we have a lot of content over there. Our program is also coming into that only, NPTL. So here we have many PDFs available. Many courses are there. Not required to go to a college to learn a particular course. It is available in a SWAYAM. All the courses are available. Maybe along, if I do a computer degree, a bachelor degree, I may be taught with some languages only in my master's. I need not to wait up to that for my job opportunity. I can join a free SWAYAM course, enroll myself for 15 days. I have all recorded lectures over there. I have some live events over there. Attend all that, do the exercise, whatever the course content is asking. I'm finishing a course, I'm getting a certificate, and that I'm producing with my employee, employer. So that is accepted. Nobody knows, but that is why, like many, the higher education, the level of higher education, studying of the students ratio has dropped down maybe for the past 2 years, because
in an UG itself, they are embedding themselves with all these kind of other online certificates, online classes, and to surprise, I think at Bangalore, Zoho is a one IT company where they have adopted a school or they are running a school of their own. They are giving training for every child from class 6. And the topper of the school will be appointed directly after their class 12 to the Zoho company. Zoho is such a vast, it is a upcoming, very passionate company for many young generation children. They wanted to join in Zoho because they like the lifestyle of it. So that way the education system also have changed. This is one slide where a spoken tutorial, it's an open source software, whereas everyone are having a headphone like I do have, and they are learning with the PC how to pronounce a word, how to read a word, how to speak something. All these audio video tutorials are available, and all these are also available in our NPT also. Okay, and this IIT Delhi, Mumbai, and other IITs, they are doing a lot of courses in blended learning and flipped learning. Blended learning is I'm doing it immediately then and there. Flipped learning, I just do some homework and I come over there. Okay, and the present government also, our central government and all state governments, they are bringing us new LMS platforms, learning management system platform, according to the emerging trends. So we can see a tab is there, and we can see some live, both face to face and online versions are there. A child is sitting at home and learning something, writing something and posting into it. So all these blended learning are available over there. Okay. And this is one more thing like where you have a Spock. Spock, I think I need not to maybe. And this is a Swayam portal. So you can see here the various courses available. You can see the categories in education, categories in engineering, the language path, and every course, what was the rating, what was the earlier people has given a rating, and based on that, we can select a course. We can select a course. Here is one course saying fundamental of curriculum and engineering education. There is one course in ICT in teaching and learning. यह चलता है ऐसा भी तो सभी courses है तो ये ठीक है तो I have to go explore in Google. If I don't go in Google, नहीं मेरा तो outdated. It is outdated. And earlier also it was only with the laptop. People were running for a mainframe computer, for a PC, for a desktop. अभी तो इसमें तो आ गया तो mobile में है. So mobile learning, you trust me, I think many computer professors must be there in this platform. When I teach Python, Python is a language, it's a very popular language, which is very popular in artificial intelligence also. That language, to solve any problem, the coding of that language in a machine learning or an artificial intelligence, I'm writing it in Python. When I write some scripting on Python, I allow my student to take their mobile because already I ask them to first download the mobile version of Python into their mobile phone, into their smartphone. And the moment I explain the coding, my student do the programming part of it and they are obtaining the result, which is happening with the smartphone. So that we call it as mobile learning. Okay. Now we'll go to this. So this is something about the theoretical. Now let's go to few demo versions where I will first let me go to, I think this will be common for most of you, SEI Hub. So many of the science people must have visited this science hub, SCI hub.
Can I get some response? Can I get some response? How many of you have gone to this SEA hub? Yes. If I give a DOI of my research paper, suppose I go to Google. Has my screen changed? Has my screen changed? Can I get a response? Sorry. Yes, ma'am. Yes, thank you, ma'am. This is my Google Scholar page. This is my Google Scholar page. See here all my articles, my research publications from the year, I think earlier, even much before 2014, 2012, I just started. And all my articles, my research articles have been updated over here. And these are my citations. These are my citations and my H index and my I-10 index value. This is since 2019, now up to 2024. So my citation is 954 and my scholars along with my scholars. Now if I want to take, suppose I am interested in a meteorological application, applying decision tree, whatever it is. Okay, ANFIS algorithm. Suppose if I go to this particular, I want the full paper of it. I don't get it, full paper. Everywhere, even in a Google, I don't get the full paper. So what am I supposed to do is, I have to take the DOI of the paper. I have taken one journal. Let me take the DOI here. 1 minute, I'm just getting the DOI. Which of my screen is visible now? Because after that I've opened some 2, 3 screen. A digital object identified. Do any one of you have paper so that we can give the DOI and we can get the full paper of it? You can type it on a chat box if you have. Or let me
take one DOI. See? Is my Science Hub screen is open? I think I'm working with that screen only. SEA Hub. Yeah. So here I have given only the DOI number. This is the DOI number of a particular journal article. When I give open, I get the full article of it. So whereas normally I don't get it in a Google. In a Google, it is not possible. So where I get is, I get it from the SEA Hub. This is one example where SEA Hub can be used. Okay. And the next one is from my PPT. Most of us are teachers. I mean, all of us are teachers. I would like to create a quiz online for my student. So what I do is, there is one online free open source which will create quiz with the help of AI. So it is called as AI quiz generator. Hope this, my screen is visible now. AI quiz generator, am I right? AI quiz generator. Yes, Yeah, ma'am. I think I'm getting response. Yeah, thank you, sir. So maybe, sir, you can tell one context. We can try to generate a quiz on a particular topic. Maybe you can suggest me the topic. Shall I give Shakespeare? Or I would like to have multiple choice question, and I would like to have 5 questions. I'm giving generate quiz. I'm getting 5 questions. I think it has took only some 5 seconds. Am I right, Ankush sir? Am I right? Yeah, 5 questions. Somebody can give some other topic where we can have some quiz. And the quiz can be generated in multiple choice, true or false, or as an open question. I have given the content as Shakespeare, and it has given me multiple choice. I have given options as 5 options. I can give it as even as 4 option also. Now, if I give copy, I get all the question, and I put it in my a form. I can create a Google form where I can post my questions over there, and I can ask my students. I can give a link to my student. The student will work on the quiz, and they will find it very happy when they, even if they copy an answer also, they may find it very happy. So this is one AI generating quiz online web app, which it is powered with AI, which it doesn't have a restriction at all. Only if I give my text part of the topic in which I would like to have the questions for the quiz, I can choose whether it is a multiple choice question, or it is a true or false, or it's open question, and I can share this question with more than many people as I wanted. That is also possible over there. I can share the questions also. I can share it from here also. So this particular goes to Mr. Siddhant Gandhi, Ms. Prerna Jadhav,
and Mr. Darshan Gandhi of Balchand So Institute of this is the Technology. web address of that. I have posted in the chat box. Openexams.com AI quiz generator. Okay, Okay. our judges appreciate projects of the students, and they have decided to give some prizes to the students whose projects were very innovative. Is it that audio from my side? Nice. Special prizes under the project competition. Our judges, Mr. Gangadhar Thalange and Mr. Vinit Doshi, Sir, can I ask the sponsored this. participant to The first Mahesh prize Mantu sir, please mute your mic. and Pooja Giri. Please collect the prize. okay. Okay, so this is one open AI quiz generator or a web page. Okay. And how many of you have worked on this chat GPT? Chat GPT? Chat GPT? Have you worked? Any one of you have worked on chat GPT? Project title was Yadgiri, Rishikesh Pantam, and Saivan Singh. So my chat GPT, Mahesh sir, Sai Mahesh, Dumala, and the project title was Solar Electrical Vehicle. Mahesh sir, The fifth was Lakshmi Kali, Sanyukta Kakke, and Pratna Alam, who work on sir, my screen, is it opening now? Chat GPT has come. Chat GPT screen has come. Yes, ma'am. Okay, sir, thank you. Always Ankush sir only is replying. I think, okay. Fine, at least you be in touch, sir. You don't go away. Okay. Sir, I see you must have worked with Chat GPT. Chat GPT. Yes, ma'am. Yes, sir. Sir, what shall we do in Chat GPT to give a demo? Why don't you suggest me? Institute of Technology. There are a lot of scope, ma'am, for essays, letters, articles. Yeah, you are true, sir. Mr. So Danish these are the topics where you can go. So you can write a course overview. See, when I say write a course overview, Generally related to the syllabus and long syllabus. answer questions, short One answer syllabus, questions. sir. If you don't mind, one syllabus topic. Music syllabus, ma'am. Pardon, sir? Indian classical music. And classical music. But I have given only Indian classical music. So I get some content. I get an introduction. Can I ask about Dr. Ankush? Will it reply, sir? Yes, ma'am. It will give detail. No, it doesn't give about personal information, I suppose, sir. Just like folk music in Maharashtra or any state of India. It goes to Mr. Harsh Dubey of Institute of Technology on site. Okay, so chat GPT is something, maybe if I talk again, maybe what should I talk about? Physical education, some sports, or library. Mahesh sir has to give us also some prize, I think. The first prize goes to There are so many obstacles, ma'am. We can't hear you properly. One mic is on. Sir,
Yeah, I don't know how to unmute. I think I don't have the Ankit Thakur option. sir, please mute Bharti sir mics. Yes, writing department. Please post to Okay, so we will learn to live with this, sir. Let's go with the other part. It's another track. So I would like to take frame some questions on maybe anatomy, human anatomy. Human anatomy. Some 10 10 mark questions with answer. So my topic is human anatomy. I'm asking for 10 mark question with answer. See how quickly I'm getting the questions, the answers of it. And this really helps me in getting some choice of questions. I think Mahesh has muted, but still somebody is. From where this? Miss Rikvedi Patil and Miss Mayuri Gaikwad of WI. Rikvedi Patil and Miss Mayuri Gaikwad of WI. Second prize in this category goes to Mr. Kalpesh Sarsambe and Miss I will give you the link of ChatGPT. This ChatGPT, now you have to create your own account. See, it is into my Gmail account. With my Gmail account, I am able to log in. So that we will have to do it first with ChatGPT. And ChatGPT is, but ChatGPT, that is giving me the data only from 2000, not previous data. And the latest update was of ChatGPT. I heard it was only up to 2022. So, in replacement of or in competition of ChatGPT, ChatGPT is of Microsoft. And Gemini is one which has been now come with a popular flash where recently Google picture we had Bart. Google has introduced a Bart. That has now renamed into Gemini. That has renamed into Gemini. This is the screen of it. So this was a launch of Google. But there was some interruption once this Gemini has come. This is also AI powered tool. The interruption was this Gemini was giving some false information or irrelevant information. Maybe some information, maybe anything it may be. Maybe it was telling something wrong and irrelevant. So there was some sort of disturbances, and the social community people everywhere, they were telling that Pichai has to take the charge of it, and he has to do something which is giving wrong information. So then this was modified, and now this is far better than ChatGPT. Gemini is far better than ChatGPT because, for example, it is very customized. Suppose if I say, I think my Gemini screen is now visible to all. अकाउंट नंबर हे दोनदा चेक करा बरं. अकाउंट नंबर ऍड So any you will have to go with the Gmail account. You will have to log in. Once you sign up, that is free to use. If I click this find hotels in Phuket for a week and suggest a packing list, it will give me a package where it helps me in getting into the best hotels. That is one sample. Find some YouTube videos with inspiring best man speeches. Here I have to give
Show me some videos. YouTubes. Say I'm getting some YouTube link also. Here are some YouTube's link which we can watch to get inspired for example, let us go to funniest best man. So this takes me to an external link of YouTube. This is what? This is how this actually Gemini works with. So I've given this funniest video. I've got the video and I've got the link, and this is happening with the help of Gemini. Gemini is far better than ChatGPT. That is what even I am experiencing now. Okay, this is one part. That's so that's one thing. Okay. So this is the power of my Gemini. This is the power of my Gemini. Because Gemini, I think now, yeah, and now Gemini. And maybe we can try something else. Can you recommend something like give me best? We can also type. We can type here. Draft new chat. I go for a new chat where I'm giving draft a professional resume for me. Let me see. So it is giving me a template of my resume. How should I prepare? I have to give my name, my objective, my work experience with job title, company name, how many years I worked there, my education background, and my skills, which are very important. My hard skills and my relevant skills, my soft skills also, both. And my awards and recognition, and some additional tips, all this. So this gives me a template how I'm supposed to prepare a resume. How I am prepared. And this will really help us because guidance is very important, right? So this Gemini actually helps me in making all this. And now the improved version of Gemini is really good. You all can make use of it. I am sharing the web address of that, of Gemini. Okay. There are such many tools which are available. Like we are only to a limited ones. There are a lot of tools available where you can always get interested because every day, up to date, every day things are coming out. There is one website I will finally show you. That website gives you all tools which are embedded with AI. So with AI, it is easy than going for non-AI. With AI, it is very easy. It's very easy so that you get good style of content working, which will reach the stakeholder a fast way and in a like as they want it. So that we can just see in the last one. And the most interesting one, which I prefer is that is creating forms. Creating forms. We are bounded to always write something, get the authentication tick from the student, and finally submit it to the administration. Okay. I've just created some 2-3 forms, which I would like to now edit and show it to you. I've created some 2-3 forms. One is course registration form. Let me edit it.
Hope my jot form screen is now sharing. Yes, ma'am. Yes. Let me share the web address of this. Go to the home page. Control C. There is Google form also, which we are very familiar. But this is still, it has got lot of templates. First, let me go to the home screen of this. Okay. Where I have lot of templates. See, the templates are of different categories. Form templates, card template, app templates, PDF, sign templates. Any template as per our requirement, we can choose. I have chosen form template and I have created some 2-3 form. We can even choose a card template. And we can integrate this form into all our real-time applications. You can integrate with the PayPal, you can integrate with the Google Sheet, with the Zoom, with the calendar, a Dropbox, Slack, and many more. This is something we call it as exporting. In a form where I create a form, I can even import certain things. Suppose I have created a form. I'll show you now. I have created a form. I wanted to post a video along with that, showing how to fill the form. So that is also possible in creating a form with the help of Jot form. Jot form is also free open source. It's also a free open source. It doesn't have a restriction, limitation. It doesn't say that you have to create only this much of forms per day. But at times, see, I have been into this Jot form for quite long, 1 year. So I think I have not been asked to given what do you say? Constraint. I'm allowed to create even some 5-10 forms per day, even more than that. I will share it to my student. Suppose if my principal is asking me, get the scholarship details of your second undergraduate student, or get a name list of the student who are with single parent. So immediately I create a form over here. I share this form to my class group, WhatsApp group, and I ask every student to fill it. That's all. Not posting it again because it's a live form. As I do it for a Google form. My Excel sheet is different from my Google sheet. Google sheet is somewhere everyone works online. Excel sheet is I download it and only one user works at a time. Whereas Google form, multi-users can work on it parallelly. It has got its own disadvantages also. Because when I do for my class, in another sheet or in the same sheet, my another discipline department also does the work. So sometimes what they do by mistake, they overwrite it in my place. So when it reaches the administration asks me where is your data is missing, which I have already entered. So that is one problem which we have it in our Google Forms. So these kind of Jot forms, whatever you create through Jot form, this problem can be sorted out. It can be sorted out. You can just share it only with your class group. Even Google Forms are there available. Those are much better. But here you have some ready-made templates available. Let's say I have created a form. Let me edit it.
See, I can add an element now from here. See, first what I have created is a registration form. I'm asking for the student name with the first name, middle name, last name, and the date of birth, gender. Here I have a drop down. See, I have given the month. I can incorporate with the calendar over here. I can go to settings over here, properties. I can change the label. I can change the label when I go to advanced. See the field label, birth date. I can ask date of birth, DOB. Okay. Okay. So what happens instantly? My field name is changing here. See here. The gender. I'm saying move it to the next line. Earlier it was along here. It was here. I'm saying move it to a new line. So it is moving to a new line. See, all this tailoring business and all is very easy. In Google, I'm not finding it that easy. So when I say student email, see, I'm giving with this example. When I click this, I get these properties. Or you can even remove it. I hope I'm sharing only this particular screen. Yeah. So student email, it is telling me an example, like I can say, so this is how you will have to give your email ID. Example, my name. So here settings, when I go to the properties here of this, field name, you can change whether you want it in the top or you can have it in the left, right. You can have it in the left. Set as form default. So it is a default field. An example here I've given, this is an example. This is as a sub-label. I can change it. And if I want to have one more email ID, I can ask for a duplicate field. Alternate email ID I may ask, no? So for that, I can give an option like alternate email ID. So that will be my second heading. And the options, what I can do is the entry limits, I can give any number of entry limits. And this confirmation, I can make it as on because once I give an email ID, so this normally we get it in all the forms, no? So once I give the password, it will ask all our banking applications. It will ask for the password and it will say, once again, confirm the password. Retype the password. So once I retype the password, if both my password are matching, then it says that password match and it will ask confirm the password. I can say yes. So that is one more authentication what I do. And when you go for advanced, help me in getting samples. Okay. I can add a logo over here. I can just upload a file. Let me upload a picture. Suppose it will be this. Open. See, this is my image which I have.
logo which I have added. And maybe instead of that, I can give some other. I can just drag and drop over here. Maybe this logo I can just say here and I don't know, pick one point. Okay. So this is, I can add an element. I wanted one more element like signature. I think signature already I've done. So I can sign here. I can use my pen. I can sign here. I should have this option. I can enable and I can. And all these, I can give an approval flow for every page. I can create an approval flow because when you get an application form with more than one page, so every page, only after completing that page, it will allow me to fill up the next page. So that is the approval flow. What this chart. See, this is what I have created. So I have given approval. I have to approve it once the form, maybe for NEET and other things and all, NEET, JE and all. Once we fill the form, the portal gives us some time for editing the form which we have created. Once the editing window is over, then what they do, they say that your application has been accepted. So it has to go to the approval platform and then it has to come. And I can also publish this. I can also publish wherever I feel. Maybe in the platform where I am now working or in the other platform. Suppose I say I make it as a public form available to everyone. I've given the, now I'm just copying the link. I'm just putting it into our chat box. So anyone can go to the jot form and you can open the link and you can fill it. You can do the registration part. So all these are really actually very helpful when I do it for my student. That's what I feel. Okay. And one more interesting form in this is, yeah. See, this is what is the approval one. Okay. Yeah. One more interesting in this is, I can embed a video into it. Form settings. When we want to. You can have a preview of the form now. This. Yeah. I have done my course registration. I wanted to embed that with a video, whereas that video tells me how to fill the form. So in that case, I can just embed a video. I can add a video. Yeah. This is the preview of my form. 1 minute. It is taking some time to reload. Reload. Yeah. See here I can go to my setting. See my this form, edit form. Yeah.
So here, okay, I go to my setting. I think this screen is only now sharing with. Yeah. When I go to my settings, when I go to options advanced, just give an element where I give a heading, YouTube link, and I go to my setting here, and all this, okay, I do. And here I can give the YouTube link which I wanted to get. I suppose if I give this here. Okay, I've got the link. Now if I click this link, no, this is not a YouTube link. Let me get a YouTube link. Swayam ICT. Now get a link. So here I'm giving a somebody has created a form. The link what I've given, they have created. The form on which I have posted, somebody has given some data on it. That's nice. So for this, I'm giving a going to properties in advance. In the second page, I've gone to the setting and here I've given a YouTube link. I can just move this wherever I want. In the setting, I'm giving a link now. Okay. In the advanced, here only I'm giving a duplicate of it. I'm giving a link over here in the advanced option so that I get the YouTube. Whenever I click for what I've given already, this is the YouTube link I've given. So this YouTube link actually, it helps me in showing me how to fill up the form. Next, if I give next. I give next. And I get a QR code of the YouTube link. Even I can scan this QR code and I can just see here. I have just given maybe in one advanced. I'm just giving continue.
So it will continue. It will have a file. Anything I can just add on it, which is quite interesting. This is what we can do it in our jot form. I think I spent a lot of time with this jot form because I'm quite interested. Okay, you can also go and create or customize the form as you want. And the last one, as I have already shared, this is one web page. I don't know for how many of you this advanced one will be useful. This is one web address which is called as fabird.com. So this actually, you have all AI tools and applications which is been created for all the categories. Maybe for a 3D effect. Hope this screen is now visible. I think I have changed it now, yeah. FABIRD. So I would like to go for some advertisement. I would like to do some architecture. I would like to do some art, or I want to do some audio. Some audio writer is one particular AI tool which is available. So this audio writer tool, what it does is, it converts my voice to transcription on a mobile or any gadget, whichever you want. It is trying to move with that. That's one thing. And Orphanic I think I've used SoundStream, Supertone, maybe like our Smule, which we have already been just vibrating in the social media. That also is embedded with AI now. And all this Facebook and all. See, we can see that when we post something relevant to that, we get some ad or some post. Or suppose if I say, I am from Tirupur, I am from Tamil Nadu. Some people from Tamil Nadu will automatically be connected. They will ask me, or there will be a message as a friend request. Normally, even if somebody doesn't do it, the AI actually does it. The AI by itself, it does it. Our Facebook, our WhatsApp has come out with a lot of different communities now. I don't know what to do with WhatsApp. Fed up of WhatsApp. Feel like better winding up WhatsApp and going off. It is something like that. All our social medias, I don't know about Insta. I'm not into Insta. I'm not into Facebook. I'm into WhatsApp only. That only late off I have come now. So this is one website where you can find, suppose you are interested in some beauty concepts. One AI tool is there. Modiface. I haven't tried. Maybe we can modify a face. I don't know. Bioinformatics. Business analyst. Chatbot. Chatbot, what we get in all the apps, maybe in our banking apps. In all the apps, even if we go for our IT returns, there Diksha is there in our IRCTC. Diksha asks us, may I help you? So all these are different categories where you have different applications embedded with AI, e-commerce, education, email, exterior, film designing, film making. So if you are interested, and this is not the permanent one, many things are coming out. But what I have explored to you is like jot form, which I really like. ChatGPT I've used for preparing some summaries. And Gemini also, it gives me a lot of information like expanded information in different forms. And ChatGPT, you get it only in the text form nowadays. But what happens now when you wanted to have in form of images and music and audio and multimedia, you will have to go for a paid version. That is also. So these are the, I must see in photos, how many AI apps are there? I don't know. And all these must be embedded with our Facebook and WhatsApp and other things.
That is why even face to face, we don't look that good. But all these technologies somehow beautifies us and it shows us in a different form. Okay. But at the same time, let's all advise the young generation not to post unnecessary data because our data is already sold. Even my PAN number has become very common. My Aadhaar gives me all the details. And in future, the technology may come in a way that hereafter no gadgets carrying with us. All the chips will be inserted in every human being. So even I think something, that data will be transferred. I do something, everything, all my data will be recorded. And that will be my profile. That will be my life profile. That is what technology comes into us, even to uplift us or even to destroy us. It is up to you or up to we, how do we use the technology? How do we? But as a teaching community, I'm very sure that use the technology to give some so that the student attend you properly. Otherwise, the student think that we are not knowing all these things. We are all out of all these things. That is what student think. Let's not give that kind of hope to the student or false hope to the student. Let's also keep updating our own self and learn small things. That's enough. Whatever is required for us, let us learn it. We're not going to write program. Of course, I write programs, I write coding. Computer people must be writing, but for others, we can just use the tools and the apps which are available. Okay. So can I wind up or you want me to tell something about ICT? I'll continue. However you feel. Ma'am, sorry to interrupt you, ma'am. Yes, sir. Actually, we are continue for the next session. Acha. We have to continue for the next session, and our expert has joined with us. Yeah. Okay, sir. So, Okay, if you could anyhow. permit, shall we continue? Yes, sir. So I would like to thank all the participants. Maybe any interaction, maybe one or two, any interaction, maybe I have posted my email ID. You can speak with me, you can communicate with me. Once again, I thank the MHRD of the University, Sandgesh Baba Amravati University, for giving me an opportunity. Hope I've just shared my experience, what I'm regularly practicing. It is not that I'm telling something new. I am just practicing with all this, and I'm also learning with this along with my students. So let's all keep updating our own self. All the very best, and thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for such a wonderful and insightful session. On behalf of Malvi Mission Teacher Training Center, Sant Gadge Baba Amravati University, I extend my sincere gratitude to Dr. Nasira ma'am for being with us, enlighten us and motivate us to how to use the recent era's technology, that is AI enabled teaching learning process, and how it should be integrated in our research, in our teaching, daily teaching and daily learning. Ma'am, really you have provided some of couple of tools that are very recent based on the AI, and definitely ma'am that these tools we are integrate in our teaching learning as well as in the research. So once again on behalf of Malvi Mission Teacher Training Center, I extend my sincere thanks to Dr. Nasira ma'am, and with the kind consent of Dr. Nasira ma'am, I would like to declare that this session will be over here and we will continue for the next session. Okay, Thank you sir. so much, Thank you ma'am. so Thank you much. so Yeah, much. Bye. Okay, so participants, hello, Professor Pachpande sir. Yes. Yes, sir. Yes. Shall we continue, sir? Yes, please. Thank you. Okay, so good afternoon, one and all, once again to this virtual platform, Zoom as well as through YouTube. Friends, we have divided today's session in two parts. First is, as we have already completed, that is ICT based teaching learning, and you have got some kind of tools that will be essential in our daily teaching learning. The second and very most and crucial important parts that government pay more emphasis on the Swayam,
most of you are heard Swayam and attended the courses of Swayam. Couple of participants are engaging in the development, the modules or the courses on the Swayam, and on the line of Swayam, government of Maharashtra has already come up with the Maha Swayam. So there are 40% of our curricula shall be on the Swayam as per the regulation of Ministry of Education. And for discussing this very important topic, today we have with us Professor Dr. Suhas Pachpande sir. Sir, warm welcome in behalf of Malvi Mission Teacher Training Center, Sant Gadge Baba, Amravati University to this flagship program. Friends, Professor Pachpande sir is presently discharging his duties at Department of Computer Science, Sant Gadge Baba, Amravati University. He has more than 20 years of teaching as well as the research experience in the various areas in the domain of computer science. He has also holding the additional charge of head computer center at our university. He is a coordinator of Swayam and NPTEL of our university. The basic thing is that to invite an interactive for conducting an interactive session to Professor Suhas sir is that he is a man that he have developed the two courses under the category of annual refresher program in teaching, and I think couple of participants, those who have attended this course, they have already attended the courses launched by the Sant Gadge Baba Amravati University through National Resource Center, and sir is a coordinator of that National Resource Center, and he have developed that two courses that is specifically on the skill development in higher education faculties. So he have vast experience in the domain of this kind of development of courses and how it should be developed and how that courses should be placed on this Swayam. He has discussed this issue with us. So I will not take much more time. Sir, I again warm welcome you to this flagship program and request you to start with your session. Sir, please. Thank you very much, Ankit sir, for a wonderful introduction. I'm sure I'm audible, no? Yes, Yeah. sir. Okay, thank you. Yes, sir. So, yes, as rightly mentioned by Ankit sir, that I have been fortunate to be connected with the UGC MMTTC of our university, formerly the HRDC. So first of all, at the outset, I am thankful to the director of UGC MMTC, Dr. Atik sir, for providing me this opportunity to interact with you. And as he has rightly mentioned that I was somehow connected with this National Research Center, which was means granted to our HRDC. So I got this opportunity to develop few courses on Swayam along with my colleagues. And rather than a lecture, I would be interacting with you people, and I will be sharing my experiences while developing these courses on Swayam. So we'll be discussing about MOOCs during this particular session. I'm sure that some of you might be already aware of MOOCs, and all of us are already using e-content in our day-to-day life, in our normal teaching learning scenario. So through this presentation, I will be sharing some sort of videos also. Model Ankit, what should be the language of instruction, whether it is English only or is it to be mixed? Mixer. Okay, Hindi and English. Yes, fine. sir. Okay. Are there some out of state participants? Okay, Shahid. Yes, I can see. Fine. So I will be mixing both Hindi and English. So I would be showing some video also. If at all you are not able to listen to sound or unable to see the video, just let me know. थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा उसमें कि अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो, दिख नहीं रहा है तो. Okay. Fine. So I would be discussing about this topic, learner-centric design of MOOCs and other e-content.
तो काफी साल से मतलब राइट फ्रॉम द पैंडेमिक, कोरोना पैंडेमिक जब से आया है तब से हम लोग ई कंटेंट पे बहुत ज्यादा शिफ्ट किया है हम लोगों ने। ओके, एंड ऑल ऑफ अस आर यूजिंग ई कंटेंट्स इन अवर डे टू डे सेशन, जो भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो ये जो ई कंटेंट बना रहे हैं इसमें तो हमने मास्टरी बना ली है हमारी। ओके, एंड वी आर वेरी मच कॉन्वर्सेंट विद दिस टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये जो सेशन है मेरा, इसमें आई विल बी फोकसिंग ऑन मूक्स ऑब्वियसली। तो मूक्स क्या है और मूक्स को डिजाइन कर इफेक्टिवली किस तरह से बना सकते हैं हम लोग, वो तो मैं बनाऊंगा ही, वो तो मैं बताऊंगा ही। बट देन यू कैन लुक एट दिस सेशन फॉर सम सॉर्ट ऑफ गाइडलाइंस टू मेक योर ई कंटेंट्स मोर इफेक्टिव। जो भी आप ई कंटेंट्स बना रहे हो, जो हो सकता है कि आप ई बुक्स बना रहे हो, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बना रहे हो, आप वीडियो रिकॉर्ड करके स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ तो गाइडलाइंस यहाँ पे मिलेगी कि यू विल बी एबल टू डेवलप इवन मोर इफेक्टिव ई कंटेंट्स इन दैट केस। सो लेट अस सी दीज पर्टिकुलर थिंग्स। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही है विच इज शोइंग द सिनेरियो ऑफ ए इंस्टीट्यूशनल लर्निंग। तो यहाँ पे जो टीचर दिख रहे हैं आपको, ही इज सेइंग दैट आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू बी इंडिपेंडेंट, इनोवेटिव एंड क्रिटिकल थिंकर्स हु विल डू एग्जैक्टली एज आई से। तो होता क्या है यहाँ पे कि द टीचर इज मेंशनिंग दैट कि मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट इनोवेटिव होने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, क्रिटिकल थिंकर होने चाहिए, ये सब वो एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट। बट एट द सेम टाइम द टीचर इज एक्सपेक्टिंग दैट द स्टूडेंट विल डू एग्जैक्टली एज आई से। जो मैं कहूंगा वही आपको करना है। और एट द अदर साइड मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आप इंडिपेंडेंटली पढ़ो, आप में इनोवेशन होना चाहिए। So there is a contradiction in this particular statement. So basically, we are right now into the traditional teaching scenario, conventional teaching scenario. ये क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। In this scenario, teacher is the controller of the learning environment. Okay, हम लोग डिसाइड करते हैं कि आज कौन सा लेक्चर होगा, किस टॉपिक पे होगा, मेरा टाइम टेबल क्या होगा, कौन से टाइम पे मैं पढ़ाऊंगा, कौन सा सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, कितने टाइम पढ़ाऊंगा, आज मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। सो द एंटायर पावर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी आर हेल्ड टू द टीचर ओनली, राइट। तो टीचर प्लेज द रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर। ओके, हम लोग इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में, लेक्चर्स के फॉर्मेट में हम लोग पढ़ाते हैं, सभी डिसीजन जो भी है वो हम लोग लेते हैं, राइट। एंड लर्निंग इज मेनली एसोसिएटेड विद इन द क्लासरूम। अगर किसी को पढ़ना है तो उन्हें क्लासरूम में आके ही पढ़ना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज द प्रेजेंट सिनेरियो। अगर मैं कन्वेंशनल टीचिंग की बात करता हूँ, तो अगर किसी को पढ़ना है तो उसे कहीं ना कहीं पे एडमिशन लेना पड़ेगा, किसी कॉलेज में हो या तो फिर किसी इंस्टीट्यूट में हो, राइट। वहां जाके उसको जो भी उसका शेड्यूल है, टाइम टेबल के हिसाब से उसे लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे, तभी वो सीख पाएगा, राइट। सो द कंटेंट्स ऑफ द लेसन आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि कंटेंट क्या है, लेसन के कंटेंट क्या है। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन चैलेंजेस बिफोर द हायर एजुकेशन सिस्टम। व्हाट आर दोज चैलेंजेस? द फर्स्ट इज इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। हमें मालूम है कि आजकल का एजुकेशन जो है वो थोड़ा उसका प्राइस जो है, कॉस्ट जो है वो बढ़ते जा रहा है, राइट। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी जो भी हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ रही है। स्पेसिफिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आईसीटी, तो आईसीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स अगर हम बात करते हैं तो उसमें है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ती है। इट इज नॉट पॉसिबल दैट एवरीवेयर द इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल। The third problem is lack of skilled faculty. Obviously, what is happening nowadays is that there are so many new technologies that are being introduced into the market. और सभी subjects जो है उसको पढ़ाने के लिए, सभी टेक्नोलॉजी पढ़ाने के लिए हर जगह पे फैकल्टी नहीं हो सकती, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सोशो इकोनॉमिक बैरियर। हमें मालूम है कि जो रूरल एरियाज से जो स्टूडेंट्स आते हैं, तो रूरल एरियाज में कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन में इट मे नॉट बी पॉसिबल कि हर जगह पे हर तरह के इंस्टीट्यूट होंगे, ये जरूरी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि काफी बार क्या होता है कि ये जो रूरल एरियाज होते हैं उनमें से लर्नर्स को बाहर आके किसी सिटी में जाके पढ़ना पड़ता है, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी।
तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये जो सोशो इकोनॉमिक गैप है, इसकी वजह से दिस हैज रिजल्टेड इनटू द लो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ये जो लर्नर्स है, दे आर बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ एजुकेशन सिस्टम से वो बाहर जा रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन सम कोर्सेज। वहां जाके पढ़ना सबको नहीं पॉसिबल हो पाता। तो ये जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, दिस इज वेरी क्रिटिकली बीइंग एग्जामाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो, राइट। ये एक इश्यू था कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में बहुत कम हो रही है। और दूसरा एक इश्यू था, देयर इज अ चेंज इन द लर्नर्स बिहेवियर एंड रिक्वायरमेंट। ये जो नया जनरेशन आ रहा है, हमारे सामने जो जनरेशन है, दिस जनरेशन इज ए टेक्नो सावी जनरेशन, राइट। सो दे हैव एडॉप्टेड द टेक्नोलॉजी। ये जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ ही आई है, ओके। दे हैव राइट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, ओके। हम लोग बोलते हैं कि हमारे जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, दे कैन हैंडल द स्मार्टफोन बेटर देन अस, राइट। तो मतलब क्या होगा कि टेक्नोलॉजी उन्हें बहुत अच्छी तरह से हैंडल करने आती है, एंड दे आर यूज्ड टू वर्क विद दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, एंड दिस इज व्हाई देयर इज ए नीड टू डिवाइस न्यू एंड इनोवेटिव पेडागोजीज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑल्सो। तो हमारी जो ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग सिनेरियो था, उसमें हमें नए पेडागोजीज जिसमें टेक्नोलॉजी है, इस तरह के पेडागोजीज लाना बहुत जरूरी है। तभी हम लोग ये जो नई जनरेशन है, उनका हम एंगेजमेंट हम रख सकते हैं, राइट। So now that traditional teaching learning scenario has now shifted towards the learner centric teaching scenario. Now let us see what is this. So here the role of the teacher is that of a facilitator and guide. तो यहाँ पे हम इंस्ट्रक्टर नहीं है, हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू guide the learners, we are going to facilitate the learner, right. And in this particular system, the students are in control of their own learning. Now what sense we are talking about this? तो जब स्टूडेंट्स को लगता है कि चलो आज हमें हिस्ट्री पढ़ना है, तो दे कैन लर्न हिस्ट्री। आज हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना है, दे आर फ्री टू learn that particular topic. Then this learning can be like this: they can learn independently, they can collaborate with each other, they can cooperate with each other, and in this way the learners can learn whatever they want, okay. अभी ये जो सिस्टम है, इसमें यूटिलाइजेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द बेसिक कंटेंट। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ाई किया है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है द अप्लाइड एस्पेक्ट। उसके अप्लाइड एस्पेक्ट उन्होंने सही में सीखे है कि नहीं, दैट इज मोर फोकस्ड इन दिस पर्टिकुलर लर्नर सेंटरिंग टीचिंग, एंड दिस इज वेयर द लर्नर्स कैन कंस्ट्रक्ट देयर ओन knowledge, right. Now, in this particular scenario, the learning can also happen outside the classroom. So even though the learners are not coming to the classroom, still they should be able to learn. तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम हमने देखा था ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का, कि अगर स्टूडेंट्स दे आर नॉट केपेबल ऑफ कमिंग टू द क्लासरूम, देन लेट द लर्नर और लेट द लर्निंग रीच टू द लर्नर के पास हमें क्लासरूम लेके जाना है, ऐसा ये वाला एक कंसेप्ट है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस द आईसीटी इनेबल्ड टीचिंग लर्निंग पेडागोजीज हैव टू प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस पर्टिकुलर अप्रोच, राइट। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो गूगल टूल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है इसमें। अगर आप में से कहे कोई यहाँ पे देयर आर सम पीपल हु आर फ्रॉम education, then they are aware of these two terminologies, blended learning and flipped classroom. तो हमने अभी दो अप्रोचेस के बारे में डिस्कस किया। एक था ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग अप्रोच और दूसरा था लर्नर सेंट्रिक टीचिंग अप्रोच, ओके। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वी आर स्कीपिंग द एंटायर क्लासरूम अप्रोच। सी वी हैव सीन इन द पैंडेमिक, कोरोना पैंडेमिक की, उसमें क्या हुआ था कि एंटायर टीचिंग लर्निंग वाज ऑनलाइन, और उसके क्या ड्रॉबैक्स थे ये हमें भी पता चला, टीचिंग कम्युनिटी को भी पता चला, और इवन द जो हमारा समाज है उनको भी पता चला कि हाउ इफेक्टिव द क्लासरूम टीचिंग इज देयर, राइट। तो इज इट नॉट पॉसिबल दैट जो भी हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, दैट ट्रेडिशनल टीचिंग शुड बी मिक्स्ड विथ द मॉडर्न टीचिंग सिनेरियो, राइट। तो टेक्नोलॉजी को हमें मिक्स करना है इसके साथ में, एंड दिस कैन हैपन विद द ब्लेंडेड लर्निंग। तो हम क्या करेंगे कि ट्रेडिशनली क्लासरूम में पढ़ाएंगे, बट
we will be adapting the technology along with my traditional teaching learning. Okay, ये हो गया blended learning. और दूसरा जो है दैट इज फ्लिप्ड क्लासरूम. फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है कि यूजुअली हम क्या करते हैं कि फंडामेंटल थिंग्स जो है, बेसिक थिंग्स जो है वो हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं, और उसको जो प्रोजेक्ट वगैरह होता है, जो अप्लाइड एस्पेक्ट्स होते हैं, वो अप्लाइड एस्पेक्ट्स हम लोग स्टूडेंट्स को उनको घर पे एज ए होमवर्क देते हैं. तो फ्लिप्ड क्लासरूम क्या बताता है कि with the help of technology we will teach the basics and fundamentals to the learners at their home. तो वो उनके घर में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग उनको फंडामेंटल्स पढ़ाएंगे, और उसका जो भी अप्लाइड एस्पेक्ट्स है वो द स्टूडेंट्स विल परफॉर्म इन द क्लासरूम अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम. तो हमें क्या करना है कि रादर वी हैव टू ब्लेंड ये दोनों चीजें, जो मेरा ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग सिनेरियो है उसको टेक्नोलॉजी के साथ में हमें मिक्स करना है. और इसके लिए देयर आर सो मेनी ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल, जो हमें ऑलरेडी मालूम है. ई लर्निंग है, ई कंटेंट वी आर अवेयर, ऑडियो वीडियो कोर्सेस है, ई बुक्स है. देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर अवेलेबल फॉर अस टू बी मिक्स्ड, ब्लेंडेड विथ अवर ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग सिनेरियो. Along with this, there is one thing that is gaining very big popularity, and that is MOOCs. So let us see what is MOOCs. So these are some of the online resources that we are all aware. Google Tools शायद आप सबको मालूम है, ड्राइव है, फॉर्म्स है, डॉक्स है, और इसके साथ में एक गूगल टूल है क्लासरूम नाम का. गूगल क्लासरूम इज वन ऑफ द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, I have intentionally shown you this particular screen. There are some learning management systems. Moodle is one of them. Google Classroom is one of them, and there are so many such learning management system. ये स्क्रीन मैंने इंटेंशनली इसलिए डाला है कि आप जो ई कंटेंट्स बना रहे हो, ये ई कंटेंट्स आप स्टूडेंट्स को किस तरह से शेयर कर रहे हैं. तो यूजुअली हम लोग शेयर कैसे करते हैं कि आजकल तो व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं. तो मैंने जो भी ई कंटेंट बनाया है, मैं क्या करता हूँ कि आई शेयर दीज ई कंटेंट्स थ्रू द व्हाट्सएप ग्रुप टू माय स्टूडेंट्स. तो रादर देन डूइंग दिस, इफ वी आर शेयरिंग दीज ई कंटेंट्स विथ माय स्टूडेंट्स in the form of this learning management system, then they are also counted for your APIs and all those kind of things. So इसलिए मैंने intentionally ये screen आपको दिखाया है. So basically we will be talking about two things in this particular session. एक तो e-content के बारे में बात करेंगे हम लोग, और दूसरा हम MOOCs के बारे में बात करेंगे. Although both of them are somewhat similar, there are some distinctions between both of them. तो पहले हम लोग e-contents के बारे में बात करते हैं. So e-contents are basically non-interactive resources like documents, videos, PowerPoint presentation, जो भी है. तो हमें मालूम है कि ये अगर मुझे कुछ सीखना है तो मैं इंटरनेट से डाउनलोड कर सकता हूँ. तो पीडीएफ फाइल हो सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, वीडियो है, इसमें से मैंने पढ़ा बहुत कुछ. ओके, these are the very nice resources through which I can really learn lot many things. But one of the drawback of this e-content is that they are all non-interactive. उसमें हम लोग इंटरेक्शन नहीं कर सकते. तो किसी स्टूडेंट ने लेट से जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ा, एक बॉटनी का स्टूडेंट है, और उसने क्या किया कि इंटरनेट से काफी सारा मटेरियल डाउनलोड किया, ई कंटेंट डाउनलोड किया, और उसने उसमें से बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ा, राइट. अगर उसको कुछ डाउट्स है इसमें, so now there are no ways that this student can approach the person who has developed these particular resources. Just like अगर क्लासरूम में वो स्टूडेंट पढ़ रहा है और उसे कोई डाउट अगर आता है, क्वेश्चन अगर होता है, तो ये स्टूडेंट अपने टीचर को वो क्वेश्चन पूछ सकता है. तो दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन ई कंटेंट. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉन इंटरेक्टिव रिसोर्सेज. और सेकंड जो ड्रॉबैक है ई कंटेंट का, वो है असेसमेंट का. See, there is no one who will assess how much the learner has learned from this particular resource. तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, ये जो स्टूडेंट था बॉटनी का, उसने बायो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा, ओके, लेकिन हाउ मच ही हैज रिसीव्ड, हु इज गोइंग टू सर्टिफाई दैट दिस स्टूडेंट हैज लर्न. तो उसके लिए एक ही मैकेनिज्म है, सेल्फ असेसमेंट, राइट. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ ई कंटेंट. The e-contents are developed in 4 quadrants. ये हमारे लिए important topic है. I will be telling you कि ये जरूरी क्यों है हमें समझना.
मैं ई कंटेंट के बारे में भी बोलने वाला हूँ और मूक्स के बारे में भी बोलने वाला हूँ, आपके लिए इसेंशियल है, आपके एपीआईज के लिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पे अटेंशन, एंड सेकंडली आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज आस्क मी सम क्वेरीज इफ एट ऑल दे आर, मतलब आपको कुछ क्वेश्चन अगर होगा ना तो आप प्लीज मुझे पूछ लो, बिकॉज इफ द लेक्चर इज इंटरेक्टिव देन इट बिकम्स मोर लाइव। नहीं तो क्या होता है कि एक मोनोटोनस हो जाता है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी यू इन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, मुझे आपके चेहरे नहीं दिख रहे, ओके तो आई एम द ओनली पर्सन हु इज टॉकिंग, तो ये मोनोटोनस बन जाता है। तो इफ एट ऑल यू हैव सम क्वेरी यू मे प्लीज आस्क मी, ओके, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज, फाइन। तो ये जो ई कंटेंट है उसको 4 क्वाड्रेंट में बनाया जाता है, ओके। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड एज ई टेक्स्ट, ओके। इसमें क्या आता है, इट कंसिस्ट ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, it can be in the form of ebooks, it can be PDF, it can be PowerPoint presentation or anything, okay। तो इसकी मतलब खासियत क्या है, what is meant by this self instructional material? अगर मैं ई कंटेंट बना रहा हूं, इफ आई एम क्लेमिंग दैट आई एम द ऑथर ऑफ दिस ई कंटेंट, तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें मैं जो भी मटेरियल शेयर करूंगा दिस शुड बी माय ओन मटेरियल। सी आई एम अगेन रिपीटिंग हियर कि यहाँ पे मैं जो भी शेयर करने जा रहा हूँ मटेरियल, इट हैज टू बी माय ओन मटेरियल। मैंने कहीं से उसका रेफरेंसेस, मतलब प्लागेरियस तो ऑब्वियसली होना ही नहीं है, लेकिन ये मैंने खुद के बनाए हुए लेक्चर नोट्स जैसे हम लोग बनाते हैं ना, तो उस तरह के मेरे अपने लैंग्वेज में बनाए हुए ये नोट्स होने चाहिए, रीडिंग मटेरियल होना चाहिए। दिस इज ई टेक्स्ट। द सेकंड क्वाड्रेंट इज कॉल्ड एज ई ट्यूटोरियल, ओके। जैसे मैंने बताया कि कोरोना पैंडेमिक में हमने देखा कि इवन दो ऑनलाइन लर्निंग वाज वेरी मच कन्वीनियंट टू द लर्नर्स के लिए वो कन्वीनियंट था, बट we have seen that the presence of a teacher is very essential। तो जब तक वो टीचर नहीं पढ़ाता, ओके, तब तक वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से नहीं समझती, सिर्फ पढ़ के नहीं समझ पाता। तो वीडियो लेक्चर्स ऑफ द टीचर आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ई कंटेंट्स। तो ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है दिस इज कॉल्ड एज ई ट्यूटोरियल एंड इट कंसिस्ट ऑफ द वीडियो लेक्चर्स ऑफ द टीचर। तो ये जो लेक्चर्स है, अभी ये लेक्चर किस तरह से होना एक्सपेक्टेड है, सी यूजुअली क्या होता है कि जब हम लेक्चर्स के बारे में बात करते हैं, वीडियो लेक्चर्स के बारे में, तो हम लोग हमारे सामने एक कैमरा रख देते हैं, हो सकता है मोबाइल का कैमरा हो या तो प्रोफेशनल कैमरा हो। तो कैमरा के सामने हम खड़े होते हैं और 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का लेक्चर दे देते हैं, राइट। एंड दिस 1 hour लेक्चर इज अपलोडेड ऑन यूट्यूब, और यूट्यूब की लिंक हम लोग स्टूडेंट्स को दे देते हैं, राइट। तो हम बोलते हैं कि ओके आई हैव क्रिएटेड ई कंटेंट, बट सी द वीडियो लेक्चर्स दैट आर एक्सपेक्टेड हियर शुड बी मिक्स्ड विद सम सॉर्ट ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट्स। यहाँ पे मल्टीमीडिया कंटेंट्स होने चाहिए, ओके, जिसमें आपके सिमुलेशन हो सकते हैं, एनिमेशन मिक्स हो सकता है, ओके। अलॉन्ग विद दिस द ट्रांसक्रिप्शन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बेसिकली, कि जो मैं बोल रहा हूँ काफी बार ऐसे होता है कि मेरे प्रोनाउंसिएशन मे नॉट बी वेरी क्लियर, ओके। तो काफी बार लोग क्या बोलते हैं ना, वो समझ में नहीं आता जल्दी से। तो आपका जो वीडियो होता है उसके साथ में अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन दिया है तो इट इज वेरी इफेक्टिव, स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग, एंड सेकंडली दिस ट्रांसक्रिप्शन कैन बी हेल्पफुल व्हेन यू आर ट्रांसलेटिंग योर वीडियो। तो अगर आपका वीडियो बहुत अच्छा है, आपने इंग्लिश में बनाया है, एंड इफ दिस वीडियो इज टू बी यूज्ड इन सम स्टेट लाइक मे बी लेट्स से केरला, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वहां पे अगर ट्रांसलेट करना है तो ट्रांसक्रिप्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दैट। द थर्ड क्वाड्रेंट इज वेब रिसोर्सेज, wherein we have to provide the additional reading material in the form of the web links। हमें यहाँ पे रेफरेंसेस देने हैं एडिशनल रीडिंग मटेरियल के, विच आर नॉट डेवलप बाय माई सेल्फ, मेरे अपने नहीं है, किसी और के। जैसे हम लोग क्लासरूम में लेक्चर लेते हैं, तो ड्यूरिंग द लेक्चर आई मे सजेस्ट माय स्टूडेंट्स कि अरे ये जो टॉपिक है, लेट्स से कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें एक ऑथर है, जेम्स पुरोस नाम के ऑथर है, उनका कंप्यूटर नेटवर्क नाम का बुक है, यू शुड रीड दिस पर्टिकुलर बुक। तो इस तरह के रेफरेंसेस मैं दे सकता हूँ, मैं किसी यूट्यूब वीडियो के रेफरेंसेस यहाँ पे दे सकता हूँ। आई कैन गिव द रेफरेंसेस ऑफ सम आर्टिकल्स, आई कैन गिव द रेफरेंसेस ऑफ सम विकिपीडिया कंटेंट्स, ओके। जो भी
वेब रिसोर्सेस है, एडिशनल रीडिंग मटेरियल, उसके रेफरेंसेस हम क्वाड्रेंट 3 में स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। और चौथा जो क्वाड्रेंट है दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ असेसमेंट। सो ऑब्वियसली अगर ये सब क्वाड्रेंट्स पढ़ने के बाद स्टूडेंट को लगा कि ओके नाउ लेट मी चेक हाउ मच आई एम रियली मास्टर्ड, मुझे कितना नॉलेज आया है, तो उसको असेसमेंट की जरूरत है। तो यहाँ पे असेसमेंट जो होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ असेसमेंट। तो हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं, क्विजेस दे सकते हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सभी प्रकार के क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। बट व्हाट इज इसेंशियल हियर इज दैट आई हैव टू प्रोवाइड द आंसर्स आल्सो, बिकॉज लर्नर को वो कंपेयर करना पड़ेगा ना कि जो मैंने सॉल्व किया है असेसमेंट, वेदर आई हैव करेक्टली सॉल्व्ड इट और नॉट। तो सेल्फ असेसमेंट मॉड्यूल में हमें क्वेश्चंस भी देने हैं और किसी और सेक्शन में हमें उसके आंसर्स भी देने हैं, राइट। सो ई कंटेंट अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने ई कंटेंट डेवलप किया है, तो मुझे ये 4 क्वाड्रेंट में मेरा ई कंटेंट होना चाहिए, राइट। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एपीआईज। एपीआईज में इसका टॉपिक हमारा आने वाला है। सो दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स। Okay, the same quadrants are explained in details here. So e-text, which are the contents written by myself. E-tutorial consists of the video lectures of the learner. Okay. थर्ड में वेब रिसोर्स, जहाँ पे सप्लीमेंट्री मटेरियल जो भी मैंने डिस्कस किया, दिस एवरीथिंग कैन बी शेयर्ड इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेल्फ असेसमेंट है। सो ये 4 क्वाड्रेंट है मेरे ई कंटेंट के। I would like to show some examples of e-content. तो e-पाठशाला या तो e-PG पाठशाला, ये 2 इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये क्रिएट किया हुआ है। नाउ दीज आर द स्क्रीनशॉट्स। तो ये स्क्रीनशॉट मैंने करीब 2 साल पहले लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि whenever we talk about the technology based education, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो एक मिसकंसेप्शन ऐसे होता है कि यहाँ पे सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के ही कोर्सेज होंगे। यहाँ पे हम जो लैंग्वेज है, ह्यूमैनिटीज है, उसके कोर्सेज तो हो नहीं सकते। बट इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर लिस्ट, यहाँ पे आपको दिखेगा कि बायोफिजिक्स है, आर्किटेक्चर है, बट उसके साथ में आपको दिखेगा इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, यू कैन सी होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, यू कैन सी हियर एजुकेशन, ओके, कॉमर्स। तो सभी टाइप के कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है एंड द नंबर्स दैट आर शोन इन रेड कलर, दे आर द नंबर ऑफ कोर्सेस दैट आर डेवलप्ड। ओके, तो ये 2 साल पहले का स्क्रीनशॉट है, अभी तो इसमें और भी ज्यादा एडिशंस हो चुके होंगे, राइट। सो दिस इज हाउ द ई कंटेंट्स आर अवेलेबल इन ईपीजी पाठशाला। यहाँ पे मैंने एक सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, कंप्यूटर साइंस। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ई टेक्स्ट, जहाँ पे जो भी रीडिंग मटेरियल है वो शेयर किया है। देन secondly, this is the second quadrant जहाँ पे e-tutorial दिया है। This is the third quadrant जहाँ पे additional reading material दिया है। Okay, so this was related to the e-content. Now let us see what are MOOCs basically. थोड़ा हम लोग शिफ्ट होते हैं, जो मेरा मेन टॉपिक था MOOCs का, उस पे हम लोग शिफ्ट होते हैं यहाँ पे। So I am expecting that you are not aware of the MOOCs basically. MOOC stands for Massive Open Online Courses. Let's see what are these. Massive in terms of enrollment numbers. अब हम लोग अगर डिस्कस करते हैं किसी भी कोर्स का, अगर किसी को कुछ पढ़ना है, कोई कोर्स में अगर एडमिशन लेना है, तो हर कोर्स का एक सैंक्शन इनटेक होता है। ओके, तो लेट्स से बी.कॉम में एडमिशन लेना है, बैचलर ऑफ कॉमर्स में, तो हो सकता है कि वहां पे जो सैंक्शन इनटेक मिला है दैट इज 50। तो जब 50 एडमिशन कंप्लीट हो जाते हैं, तो इवन दो देयर आर सो मेनी मोर स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू टेक एडमिशन, उन्हें हम लोग एडमिशन नहीं दे सकते। क्या, क्यों? बिकॉज जो 50 की हमारी इनटेक थी वो तो फुल हो चुकी है, राइट। तो ये जो MOOC वाले कोर्सेस होते हैं वो ऐसे नहीं होते, इनका जो इनटेक होता है दैट इज वर्चुअली अनलिमिटेड। सो देयर कैन बी hundreds and thousands and billions, okay, billions of learners can be enrolled to a single course in MOOC, okay. Though O stands for open to all. जो सबसे शुरू में जो देखा था ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का, तो गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है कि लेट एवरीबडी लर्न समथिंग, ओके।
एजुकेशन से कोई लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए, तो वी वांट एवरीबॉडी टू लर्न। सो लेट्स से कि अभी किसी को टैली पढ़ना है, एक अकाउंटेंट है, ओके, एक जिसने बहुत ज्यादा वो पढ़ाई नहीं किया है, उसका अपना खुद का बिजनेस है, लेकिन ही हैज नॉट लर्नड आफ्टर 10th। उसने 10वीं के बाद में पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन उसका बिजनेस बहुत अच्छे से एस्टाब्लिश हो चुका है, ओके, और उसको टैली पढ़ना है अभी उसके बिजनेस के लिए। तो अगर वो किसी इंस्टीट्यूट में, इवन दो इट इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, वहां पे अगर जाता है तो उसको पूछा जाता है कि अरे आर यू फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, आपने 12वीं कॉमर्स किया है क्या, नहीं किया है तो आपको टैली में एडमिशन नहीं दे पाते हम लोग। सो देयर आर सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट फॉर एवरी कोर्स। हर कोर्स के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपको 12वीं होना चाहिए, आपको बीए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप ये सीख पाओगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेसिकली, एंड दैट्स व्हाई दीज कोर्सेज आर ओपन टू ऑल, सो एनीबडी कैन टेक एडमिशन टू दीज पर्टिकुलर कोर्सेज, ओके। तो लेट्स से कि एक क्लर्क है, बैंक में एक क्लर्क है, और उसको नई टेक्नोलॉजी पढ़नी है कुछ तो भी, तो ऑब्वियसली वो तो कहीं पे जाके एडमिशन नहीं ले पाएगा, तो ही शुड बी एबल टू टेक एडमिशन। और ऐसे लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, वो अगर एडमिशन लेते हैं तो नेचुरली दे कैन नॉट गो टू ए पर्टिकुलर कैंपस। एक किसी कॉलेज में जाके उसको जो टाइम टेबल है सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक, वो तो जाके एडमिशन लेके वो लेक्चर्स नहीं अटेंड कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई दीज कोर्सेज आर फुल्ली ऑनलाइन। तो जितने भी कोर्सेज है वो टोटली ऑनलाइन है, ओके। अभी ये जो अपर 3 पार्ट जो थे, दे आर वेरी मच सिमिलर टू ई कंटेंट। तो ई कंटेंट भी इसी तरह से है कि अगर मुझे सिर्फ पढ़ना ही है, जो मैंने टैली का एग्जांपल दिया, तो ये जो आदमी था उसको तो टैली तो वो इंटरनेट से भी पढ़ सकता था, राइट, वो ऑनलाइन भी है, और ई कंटेंट तो कितने भी लोगों तक पहुंच सकता है, राइट। How MOOC are different than the e contents, typical e contents? So see that last C is where the MOOCs are different than the e content, okay। तो जिस तरह से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको टैली के कोर्स का, तो मैं जब किसी इंस्टीट्यूट को अप्रोच करूंगा तो वो बताएगा कि अच्छा देयर इज अ सर्टिफिकेट कोर्स ऑन टैली, ओके। टैली का एक सर्टिफिकेट कोर्स है, उसका ड्यूरेशन है 3 महीने, ओके। इट विल स्टार्ट ऑन 1st of July एंड इट विल एंड ऑन 30 of November और अक्टूबर, उसमें वो खत्म होगा, और उसकी एग्जाम होगी नवंबर में, ओके। एंड देयर विल बी ए काइंड ऑफ असेसमेंट, आपको इंटरनल एग्जामिनेशन भी रहेंगे और आपको एक फाइनल एग्जामिनेशन भी रहेगा। आप दोनों मिलके अगर पास होते हो तो आपको एंड में एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जब मैं किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में पढ़ता हूँ, उसको सिलेबस होता है, राइट। तो इसी तरह का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मूक कोर्सेस में भी होता है, राइट। सो एवरी मूक कोर्स हैज ए स्ट्रक्चर, उसका सिलेबस होता है, उसको कौन पढ़ाता है वो सब हमें पता चलता है, उसका एक ड्यूरेशन होता है 3 महीने 4 महीने का, वीक्स में हम लोग ड्यूरेशन देते हैं। उसमें असेसमेंट होता है, आपका इंटरनल असेसमेंट किया जाता है, आपको एक फाइनल एग्जामिनेशन भी देना पड़ता है, राइट। और अगर आप वो दोनों पास होते हो तो अल्टीमेटली you will be getting a certificate. This is what is the difference between your typical e-contents which are downloaded from the internet or MOOCs, right? So the basic philosophy of MOOC is anyone, anytime, anywhere. तो कोई भी हो उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ने को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, since he may be anybody। तो अगर वो वर्किंग है कहीं पे तो उसको उसके टाइम के फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार जब भी उसे टाइम मिलेगा, जहां कहीं पे वो हो, उसको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। दिस इज व्हाट द मूक इज, राइट। सो नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ ए मूक। मूक का स्ट्रक्चर क्या है? हमने ई कंटेंट का स्ट्रक्चर देखा 4 क्वाड्रेंट का, एग्जैक्टली मूक का भी 4 क्वाड्रेंट का स्ट्रक्चर है। ओनली थिंग इज दैट देयर आर सम माइनर चेंजेस। सो लेट अस सी व्हाट आर द चेंजेस। द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ मूक इज कॉल्ड एज ई ट्यूटोरियल। जो सेकंड क्वाड्रेंट था ई कंटेंट में, वो अब मूक्स में हो गया ई ट्यूटोरियल फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब मूक का जो प्राइमरी कंपोनेंट है, द प्राइमरी कंपोनेंट इज द वीडियो लेक्चर ऑफ द टीचर हु हैज डेवलप्ड दिस पर्टिकुलर मूक। तो सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो आपके वीडियो लेक्चर्स है।
फिर से वही जो मैंने आपको बताया था, वीडियो लेक्चर्स किस तरह से होने चाहिए, सिर्फ रिकॉर्डेड नहीं होने चाहिए वो आपको कैमरा के सामने खड़े होके, उसमें आपको मल्टीमीडिया मिक्सिंग करना है, एनिमेशन जो भी है व्हाटएवर ग्राफिक्स वगैरह वो मिक्स करने हैं। आपका जो लेक्चर है वो पूरा 1 घंटे का वीडियो एक्सपेक्टेड नहीं है यहाँ पे। दिस वीडियोज आर एक्सपेक्टेड टू बी शॉर्ट ड्यूरेशन वीडियो, 5 मिनट के है, 8 मिनट के है, नॉट मोर देन दैट। तो आपको आपके वीडियोज डिवाइड भी करने हैं यहाँ पे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, राइट। सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट जो है उसे ई टेक्स्ट बोलते हैं। तो जो हमने वहां पे डिस्कस किया था ई टेक्स्ट, एग्जैक्टली वैसा ही क्वाड्रेंट ये है। हियर आई विल बी शेयरिंग माय ओन मटेरियल, जो मैंने अपना मटेरियल जो बनाया है, राइट, वो मटेरियल आई विल बी शेयरिंग हियर इन द फॉर्म ऑफ मे बी पीडीएफ फाइल्स होंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होंगे, ई बुक्स होंगे। इसके अलावा जो थर्ड क्वाड्रेंट था ई कंटेंट का, वो यहाँ पे मर्ज कर दिया है सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा अपना मटेरियल तो होगा, इसके साथ में जो एडिशनल रीडिंग मटेरियल हमने प्रोवाइड किया है, वो एडिशनल रीडिंग मटेरियल भी हमें यहीं पे प्रोवाइड करना है इन द फॉर्म ऑफ लिंक, और मे बी इफ दे आर फ्रीली एक्सेसिबल देन आई कैन शेयर इट लाइक दैट। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट ये हो गया। तो व्हाट इज थर्ड क्वाड्रेंट? द थर्ड क्वाड्रेंट इज डिस्कशन फोरम। दिस इज वेयर द मूक्स आर डिफरेंट। ओके, सो ई कंटेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि दे आर नॉन इंटरएक्टिव रिसोर्सेज, बट यहाँ पे मूक्स में डिस्कशन फोरम के थ्रू इंटरएक्शन इज पॉसिबल विद द अमंग द लर्नर एंड द टीचर। तो अगर ये वाला जो कोर्स है मूक वाला, वो अगर मैंने डिजाइन किया है, तो मेरे जो भी स्टूडेंट्स है, द स्टूडेंट्स कैन इंटरैक्ट विथ मी थ्रू दिस डिस्कशन फोरम। तो अगर उनको कुछ डाउट्स है, उनको कुछ क्वेरीज है, तो they can ask the question to the teacher, and the teacher or his team or even the other learners, they can reply to the queries of this particular student, right? So discussion forum provides interaction among the learner and the teacher. और चौथा जो क्वाड्रेंट है, नाउ दिस इज असेसमेंट। आपको अगर याद है तो पहला जो था ई कंटेंट, उसमें सेल्फ असेसमेंट था, राइट, बट यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट नहीं है। यहाँ पे आपका असेसमेंट किया जाएगा। जो स्टूडेंट है उसको कौन असेस करेगा? जिसने ये कोर्स डेवलप किया है, जिसे कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं हम लोग। दैट कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट विल मेक असेसमेंट ऑफ द लर्नर। तो ये असेसमेंट फिर से इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट हो सकती है। ओके, और ये जो भी फॉर्मेट हमने देखे क्वेश्चंस के, ये सभी टाइप के फॉर्मेट्स वहां पे भी अवेलेबल है। एंड देन द इंटरनल असेसमेंट इज डन ऑनलाइन। ओके, आपके लॉगिन के थ्रू आप जहां कहीं भी हो, आप आपके घर से बैठ के पूरा कोर्स कर सकते हो। आपका इंटरनल असेसमेंट भी आप जहां पे हो वहीं पे होगा ऑनलाइन। बट द फाइनल एग्जामिनेशन जो है यहाँ पे, दिस इज वेयर द स्टूडेंट हैज टू चूज द एप्रोप्रिएट एग्जामिनेशन सेक्शन विच इज नियरेस्ट टू दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। आपको स्टूडेंट के हिसाब से एक एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है और वहां जाके आपको एग्जामिनेशन देना है। बस एक दिन के लिए स्टूडेंट को किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके एग्जामिनेशन देना है। अगर दोनों असेसमेंट अगर वो पास कर लेता है तो एंड में स्टूडेंट को सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट। सो ये हो गए 4 क्वाड्रेंट। द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ई ट्यूटोरियल वेयर video lectures are provided. Second quadrant is e-text, जहाँ पे textual material is provided. Third quadrant discussion forum is there for interaction purpose. और चौथा quadrant है for assessment of the learners, right? Fine. Now let's talk about MOOC. MOOC, as I have mentioned, that they have got a schedule. एक start date होता है, end date होता है। इसमें contents हो सकते हैं, assessment हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखो यहाँ पे कि the MOOCs are already launched by some reputed institutions across the world. हमें मालूम है MIT है, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, ये जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज हैं, इनके अपने MOOC प्लेटफॉर्म, जैसे edX is a platform which is offered by MIT, Coursera is a platform offered by Stanford. ओके, इसके अलावा काफी सारे प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स भी आए हैं। आपने सुना भी होगा, यूडेसिटी है, यूडेमी है, अन एकेडमी है, खान एकेडमी है, ऐसे काफी सारे प्राइवेट MOOC प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, राइट। सो नाउ based upon these MOOC platform, the Ministry of Education of Government of India has launched its own MOOC platform, and that is called as SWAYAM.
उसमें स्वयं नाम का प्लेटफॉर्म बना है। अगर हम लोग अभी स्वयं और दूसरे मूक के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस के बारे में, तो मूक इज अ फ्री एक्सेस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ सीखना है मूक पे, आई एम टॉकिंग अबाउट सीखना, लर्निंग, ओके, तो इट इज एब्सोल्युटली फ्री। ओके, आप कितने भी कोर्स आप अगर स्वयं से करते हो तो आपको 1 रुपया फीस देने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपको सर्टिफिकेट अगर चाहिए तो आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और आपको सिर्फ फिर एग्जामिनेशन की फीस आपको यहाँ पे करना है। अलॉन्ग विद दिस, द स्वयं ऑल्सो प्रोवाइड्स ए ऑफर टू प्रोवाइड द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। आपको सीबीसीएस के बारे में मालूम होगा, एनईपी के बारे में मालूम होगा अभी। तो जो क्रेडिट मिलते हैं स्टूडेंट को, दिस क्रेडिट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्वयं ऑल्सो, राइट। तो स्वयं के बारे में अगर बात करते हैं तो इट इज ए प्लेटफॉर्म ऑफर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको कोर्सेस मिल जाएंगे, जो राइट फ्रॉम स्कूल लेवल टू यूनिवर्सिटी और इवन बियॉन्ड स्कूल, इस तरफ के कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है। आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिल सकते हैं और क्रेडिट्स भी स्टूडेंट्स को मिल सकते हैं। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स। ये स्वयं का फुल फॉर्म है। देर आर 2 वीडियो जिंगल्स आई वुड लाइक टू शो हियर। फिर से मैं प्ले करने जा रहा हूँ, अगर वीडियो या ऑडियो नहीं दिखा तो प्लीज लेट मी नो। जी सर, वो सारा मुस्तफा के लिए कुरियर है। थैंक यू, थैंक यू। अरे, अपनी सारा की खींची हुई फोटो छपी है मैगजीन में। दिखाना। देखो बेटा, हम तो तुझे कभी फोटोग्राफी का कोई कोर्स करवा ही नहीं सके थे, फिर इतनी बढ़िया फोटोग्राफी तूने कहाँ से सीख ली? स्वयं से। स्वयं? हाँ पापा, भारत सरकार का ऑनलाइन कोर्स पोर्टल है। यहाँ हजारों कोर्सेज अवेलेबल हैं जो देश के चुनिंदा यूनिवर्सिटीज के बेहतरीन प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं। मैंने भी यहीं से सीखा है। और इसकी फीस? ये बिल्कुल फ्री है। अरे वाह, क्या बात है बेटा। कितनी अच्छी फोटो है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.swayam.gov.in पर। चुने हजारों मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में से और सीखें कहीं भी, कभी भी, कुछ भी, बिल्कुल मुफ्त। स्वयं पढ़ें, आगे बढ़ें। ओके, सो आई होप इट वाज ऑडिबल आल्सो। आवाज आई थी ना सबको? यस सर, यस सर, यू आर ऑडिबल। यस सर। तो मेक इट इंटरैक्टिव, तो शायद मुझे भी बोर नहीं होगा फिर बात करने में। सो फाइन, यहाँ पे हमने देखा कि ये जो स्टूडेंट थी, शी वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन लर्निंग फोटोग्राफी। ओके, बट उसके पेरेंट जो थे, दे वेर नॉट रियली केपेबल। उनके पास वो कैपेसिटी नहीं थी कि वो किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाके उसको फोटोग्राफी पढ़ाए। बट सी, उसने स्वयं से फोटोग्राफी पढ़ी, एंड सी वाज सो मच व्हाट यू कैन से एक्सपर्ट इन दैट कि उसके जो भी फोटोग्राफ्स थे वो मैगजीन के कवर पे भी प्रिंट होके आ गए। ओके, सो व्हाट आई मीन टू से हियर इज दैट स्वयं इज प्रोवाइडिंग एम्पल अपॉर्चुनिटी, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज स्वयं पे मूक्स पे अवेलेबल है। Now let's talk about how Swayam is useful for us. वीसी सर। सर कहिए डीन साहब, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सर, एक प्रॉब्लम है। बताइए। एमएससी फिजिक्स के स्टूडेंट्स आए थे जी, और उनकी डिमांड है कि क्वांटम फिजिक्स के इलेक्टिव पेपर ही उन्हें ऑफर हो। ओके। और मुश्किल ये है कि हमारे पास क्वांटम फिजिक्स के टीचर ही नहीं है। तो इसमें इतना परेशान होने की कौन सी बात है? स्वयं है ना। स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन मूक्स कोर्स पोर्टल, जो कि देश के चुनिंदा यूनिवर्सिटीज के बेहतरीन प्रोफेसर द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो सर, इसकी फीस? ये कोर्सेज बिल्कुल मुफ्त है, और तो और स्वयं द्वारा 20% तक क्रेडिट ट्रांसफर भी पा सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स। क्या बात है सर, इतनी बड़ी प्रॉब्लम का अच्छा समाधान मिल गया। बिल्कुल। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.swayam.gov.in। ओके, तो ये जो वीडियो था, दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग। ओके, तो हमें मालूम है कि हमारा जो सिलेबस होता है, स्पेशली व्हेन वी हैव शिफ्टेड टू सीबीसीएस और एनईपी, सीबीसीएस और एनईपी में जब हम शिफ्ट हो गए तो देयर आर काफी इलेक्टिव्स। ओके, लॉट्स ऑफ इलेक्टिव्स आर देयर। और प्रॉब्लम क्या होती है, दो इश्यूज हम यूजुअली फेस करते हैं कि लेट्स से कि देयर आर
4 electives in one semester. ओके तो अगर स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास और 4 अलग अलग इलेक्टिव्स ऑफर करने की अगर हमें जरूरत पड़ती है तो सबसे बड़ा बॉटलनेक यहाँ पे आता है कि द फैकल्टी स्ट्रेंथ. ओके हमें मालूम है कि आजकल फैकल्टी की स्ट्रेंथ इतनी कम हो गई है कि जो ऑलरेडी लोड है वही इतना ज्यादा हो रहा है. तो हाउ कैन वी प्रोवाइड 4 डिफरेंट कोर्सेज फॉर ए सिंगल सेमिस्टर. ओके तो ये डिफिकल्ट हो जाता है. तो हम लोग क्या करते हैं फिर कि अरे नहीं आपको चारों नहीं ले सकते आप, इलेक्टिव में से 4 इलेक्टिव में से एक ही कोई तो भी आप चूज करो. सो अल्टीमेटली इट बिकम्स कंपलसरी. ये एक प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि हमारे पास फैकल्टी नहीं है इनफ. और दूसरा प्रॉब्लम होता है कि एक्सपर्टाइज का. हमने इलेक्टिव तो दे दिए लेकिन सभी कॉलेजेस में वो इलेक्टिव पढ़ाने के फैकल्टी है कि नहीं है, वेदर दैट एक्सपर्ट फैकल्टी इज अवेलेबल और नॉट, वो काफी बार थोड़ा सा अनदेखा किया जाता है. राइट तो यहाँ पे हम स्वयं का ऑप्शन चूज कर सकते हैं. सो इफ सम स्टूडेंट्स आर कमिंग टू यू एंड दे आर प्रेफरिंग ए पर्टिकुलर इलेक्टिव विच इज अवेलेबल ऑन स्वयं, तो अगर हमारी बोर्ड ऑफ स्टडीज उसे अप्रूव करती है तो स्वयं में से वो स्टूडेंट पढ़ सकते हैं. एंड आफ्टर लर्निंग दैट कोर्स फ्रॉम स्वयं उनके जो इक्विवेलेंट क्रेडिट्स है वो उनके मार्कशीट पे हम ले सकते हैं. दिस इज वन क्रेडिट ट्रांसफर फैसिलिटी विच इज ऑफर्ड बाय स्वयं. ओके सो दिस इज द होम पेज ऑफ स्वयं. यहाँ पे आप कोर्सेस सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आप कोर्सेस लर्न कर सकते हो. नाउ I will be going somewhat faster. I just wanted to give introduction to स्वयं. So इस तरह के काफी सारे कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है. नॉट ओनली दैट, जो रिफ्रेशर कोर्सेस है वो भी स्वयं पे अवेलेबल थे. अभी नया मिला नहीं है बट अर्पित इज वन ऑफ द इनिशिएटिव. ओके व्हाट डज द स्वयं ऑफर. जैसा मैंने बताया आपको कि स्वयं ऑफर्स क्रेडिट ट्रांसफर. अलॉन्ग विद दैट स्वयं ऑल्सो प्रोवाइड्स अ सर्टिफिकेट. तो अगर आप स्वयं का सर्टिफिकेट देखोगे तो इस तरह का स्वयं का सर्टिफिकेट होता है जहाँ पे स्वयं का लोगो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्ब्लम है और ये जो है कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट उसका लोगो है और उनके साइंस है. तो ये हो गया. दिस इज द सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड बाय NPTEL विच इज अगेन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्वयं. स्वयं के अंडर ही NPTEL आया है. तो मैंने ये इसलिए आपको इंटेंशनली दिखाया कि आई always encourage my students to join some courses on स्वयं. क्यों? क्योंकि अगर जब वो MSc या BSc पास आउट होते हैं, जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो उनके पास along with their degree certificate they have got some very important certificate like this. तो यहाँ का अगर आप सर्टिफिकेट देखोगे तो this certificate is issued by IIT Madras, right? So you can also encourage your student for this kind of thing. तो जो क्रेडिट ट्रांसफर की हमने बात किया तो क्रेडिट ट्रांसफर के लिए यूजीसी ने 2016 में एक क्रेडिट फ्रेमवर्क लाया. अकॉर्डिंग टू दिस क्रेडिट फ्रेमवर्क द स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट अप टू 40% ऑफ टोटल क्रेडिट्स फ्रॉम स्वयं. स्वयं से 40% तक के क्रेडिट स्टूडेंट्स ले सकते हैं. व्हाट इज इसेंशियल हियर इज दैट देयर आर अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड. जो भी हमारे रेगुलेशंस है, रूल्स है, ऑर्डिनेंसेस है, उसमें हमें चेंजेस करने पड़ेंगे एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. NEP में हमने ऑलरेडी ये प्रोविजन करके रखी है. सो देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज इन CBCS और NEP. ओके तो इसके अंडर अगर आप देखोगे डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्सेस है, जेनरिक ओपन इलेक्टिव कोर्सेस है और इवन ओपन इलेक्टिव कोर्सेस है. तो दीज आर सम ऑफ द options where the board of studies can decide to include the MOOC courses. ये जो स्वयं के कोर्सेस है तो यहाँ में से किसी एक जगह पे वो certainly include कर सकते हैं. Now who are developing these courses? ये जो स्वयं के कोर्सेस है ये डेवलप कौन कर रहा है? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मिनिस्ट्री ने कुछ एजेंसीज, कुछ इंस्टीट्यूट्स को आइडेंटिफाई किया जिनका नाम दिया उन्होंने नेशनल MOOC कोऑर्डिनेटर. ओके जैसे NPTEL है, UGC है, कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, CEC, IGNOU, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, these are the national MOOC coordinators for developing the MOOC courses. So UGC is responsible for non-technology postgraduate courses. CEC जो है उसको non-technology undergraduate courses के लिए उनको जिम्मेदारी देके रखी है. So you can look at this particular list और ये जो लिस्ट है इनमें से ही लोगों को फिर स्वयं पे MOOC कोर्सेज डेवलप करने की
परमिशन दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, फाइन। तो अभी ये जो लास्ट करीब अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 40 मिनट्स आई एम टॉकिंग अबाउट ई कंटेंट्स एंड मूक्स, सो हाउ दे आर यूजफुल टू अस, व्हाई शुड आई लर्न दिस थिंग, हमने ये क्यों डेवलप करने हैं, राइट। सो everybody is aware of CAS and APIs, okay, UGC रेगुलेशन 2018 जो है वो हमें याद है। तो उसमें एक लिखा है कि अगर आपको रिफ्रेशर करना है तो ऑनलाइन MOOC कोर्स भी आप कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली द UGC हैज डेवलप्ड सम कोर्सेस, अर्पित नाम के जो कोर्सेस थे, जो हमने शुरू में बात किया कि वी हैव डेवलप्ड सम 3 कोर्सेस ऑन अर्पित प्रोग्राम्स। तो वो कोर्स अगर आप करते हो तो यू आर ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू 1 रिफ्रेशर, और जितने भी लोगों ने किया है दे हैव सक्सेसफुली बीन प्रमोटेड अंडर द CAS बेस्ड ऑन दिस स्वयं कोर्स। स्वयं पे जो अर्पित का कोर्स किया उस पे लोगों के प्रमोशन हो चुके हैं ऑलरेडी, राइट। सो जैसे मैंने बताया कि इवन आवर नेशनल रिसर्च सेंटर जो हमारा सेंटर था HRDC का, उनके थ्रू भी कुछ अर्पित कोर्सेस हमने ऑफर किए थे, ओके। सो CAS में अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा है कि यू मे हैव कंप्लीटेड 1 MOOC कोर्स, ओके। अगर आपने MOOC कोर्स कंप्लीट किया है तो यू कैन be considered as equivalent to 1 refresher course. Similarly, for academic level 11 to academic level 12, फिर से अगर आपने MOOC का कोर्स डेवलप किया है या तो फिर आपने कंप्लीट किया है तो you are treated as equivalent to 1 refresher, and the same thing is for further. तो जितने भी CAS के प्रमोशन है, हर प्रमोशन में आप अगर MOOC कोर्स जो UGC ने अप्रूव किया है, जैसे अर्पित कोर्स का मैंने एग्जांपल दिया था, तो अगर वो आप करते हो कंप्लीट तो आपको रेगुलर रिफ्रेशर का इक्विवेलेंट माना जाता है और आपका CAS हो सकता है, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द API, ओके। दिस इज वेयर द पीपल यूजुअली हैव इंटरेक्शंस। तो उसमें एक जो पॉइंट था सीरियल नंबर 3 का, क्रिएशन ऑफ ICT मीडिएटेड टीचिंग लर्निंग पेडागोजी, उसमें एक पॉइंट था MOOCs का। अगर आप एक कंप्लीट MOOC बनाते हो 4 क्वाड्रेंट्स में, विच इज 4 क्रेडिट कोर्स, ओके। नाउ आई एम श्योर कि हमें MOOC के 4 क्वाड्रेंट्स कौन से हैं वो हमें तीसरा कौन सा था, कैन समबडी टेल? 3rd quadrant in MOOCs, just you may be wrong also, I am just making it interactive. Web resources. हाँ, web resources was for e-content. For MOOCs it was discussion forum, right? And 4th was assessment. तो ये जो 4 क्वाड्रेंट है, चारों क्वाड्रेंट में अगर आपने पूरा MOOC कोर्स बनाया है तो आपको 1 साल के API में आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं, राइट। यू कैन अर्न 20 मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर केस, ओके। नाउ सी, डिजाइनिंग ए MOOC इज नॉट ए वेरी सिंपल टास्क, बहुत टीडियस और बहुत बड़ा टास्क है। तो यूजुअली क्या होता है इसमें कि वी कैन शेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ माय कलीग्स। तो मेरे कलीग्स के साथ में मैं ये कोर्स कोलैबोरेशन में डेवलप कर सकता हूँ, ओके। तो जो भी MOOC कोर्सेस है, आपने एक मॉड्यूल उसका कंप्लीट किया है इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स, MOOC के चारों क्वाड्रेंट आपने एक मॉड्यूल अगर बनाया है तो हर मॉड्यूल के लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, राइट। नाउ सी, ये जो 4 क्वाड्रेंट्स जो मैंने डिस्कस किया उसमें सबसे पहला जो था ई ट्यूटोरियल, उसमें था वीडियो लेक्चर्स, और सेकंड जो था ई टेक्स्ट, जिसमें मुझे मेरे अपने लेक्चर नोट्स, रीडिंग मटेरियल मुझे अपने खुद के बना के शेयर करने थे। महेश जी, योर माइक इज ऑन, ओके, थैंक यू। सो क्या होता है कि आई मे बी वेरी गुड इन माई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मेरा अपना जो सब्जेक्ट है ना उसमें मैं मास्टर हूँ और मेरा नॉलेज बहुत बढ़िया है, तो मेरे नोट्स जो होते हैं ना वो इतने पॉपुलर होते हैं कि नॉट इवन माई कॉलेज बट आजू बाजू के जो कॉलेज है वहाँ के स्टूडेंट्स भी मेरे लेक्चर नोट्स की जेरोक्स कॉपी कराते हैं, राइट। तो इतना अच्छा मेरा टेक्सचुअल मटेरियल है। बट देन सी, इट इज ए कॉमन टेंडेंसी कि द मोमेंट आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, then
तब फिर गड़बड़ हो जाती है। आप जब कैमरा के सामने खड़े होते हैं ना, यू बिकम कॉन्शियस एंड यू आर नॉट एबल टू डिलीवर इन ए वेरी गुड मैनर। तो कैमरे के सामने मुझे प्रेजेंट करने को मत बोलो। ऐसे कुछ लोग होते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई मैं पढ़ा लूंगा लेक्चर 2 घंटे का लेक्चर दूंगा, लेकिन कैमरे के सामने बोलने को मत बोलो, राइट। तो वो अलग काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस और स्किल होता है। तो अगर मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं कैमरे के सामने नहीं प्रेजेंट कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा कि जो ई टेक्स्ट वाला जो मटेरियल था, टेक्सचुअल मटेरियल डेवलप करने वाला, दैट क्वाड्रेंट आई विल डेवलप ऑन माई सेल्फ। और मेरा एक कलीग है हु इज ए वेरी गुड ओरेटर, और कैमरा के सामने वो बहुत बढ़िया प्रेजेंट करता है, तो मैं उसको बोलूंगा कि ये वाला जो टॉपिक है तू कैमरा के सामने प्रेजेंट कर, कंटेंट्स मैं बना के दूंगा, प्रेजेंट तू कर। तो इस केस में हर मॉड्यूल के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और आपका जो कलीग है जिसने कैमरा के सामने प्रेजेंट किया उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। सो फॉर डेवलपिंग द कंटेंट इन वन क्वाड्रेंट यू विल गेट 2 मार्क्स, राइट। और जितने भी मूक्स कोर्सेस होते हैं उसके लिए एक कोऑर्डिनेटर होता है, राइट। तो अगर आप कोऑर्डिनेटर हो तो यू विल गेट 8 मार्क्स इन योर पर्टिकुलर कोर्स। सो इफ आई एम गिविंग माय ओन एग्जांपल, तो 3 साल हमने मूक्स के कोर्सेस ऑफर किया, एंड ऑल द 3 years आई वाज द कोर्स कोऑर्डिनेटर। सो आई हैव क्लेम्ड 8 मार्क्स एवरी ईयर, ओके, बिकॉज इट वाज ए 4 credit कोर्स, ओके। तो 8 मार्क्स मुझे एज ए कोऑर्डिनेटर मिले, और हर मॉड्यूल के लिए हमें 5 मार्क्स हमने क्लेम किए हमारे इसमें, बिकॉज वी हैव डेवलप्ड इट इन ऑल द 4 quadrants, राइट। सो दिस इज अबाउट मूक्स। अगर आपने मूक्स डेवलप किया तो ये है। नाउ कमिंग टू द ई कंटेंट, राइट। काफी बार मतलब जब जब एक्चुअली अभी ऑनलाइन है, बट ऑफलाइन जब लेक्चर्स होते थे तो एक क्वेश्चन मुझे हमेशा पूछा जाता था कि मैंने जो लेक्चर्स बनाए हैं, मैंने कुछ वीडियो लेक्चर बनाए हैं मेरे, और मैंने व्हाट्सएप पे मेरे स्टूडेंट्स के साथ में शेयर किए हैं, कैन आई क्लेम इट एज ई कंटेंट, ओके। मैंने मेरे पीपीटी बनाया है और मैंने पीपीटी मेरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है, कैन आई क्लेम इट एज ए ई कंटेंट। मैंने एक वेबसाइट बनाई है और उसमें मैंने मेरा रीडिंग मटेरियल स्टूडेंट्स के साथ में शेयर किया है, कैन आई क्लेम इट एज ए ई कंटेंट। तो उसके क्वेश्चंस के अभी ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट इन 4 quadrants फॉर ए कंप्लीट कोर्स। आप जो कोर्स पढ़ा रहे हो, लेट्स से आई एम टीचिंग एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट सेमिस्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ, और उसमें एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क नाम का। तो ये जो कंप्यूटर नेटवर्क नाम का सब्जेक्ट है, वो पूरा सब्जेक्ट के लिए मैंने अगर टोटल 4 क्वाड्रेंट में कंटेंट्स बनाए हैं, 4 क्वाड्रेंट मतलब मेरा वीडियो है, मैंने रीडिंग मटेरियल दिया है, मैंने डिस्कशन फोरम में उनके साथ में कम्युनिकेट किया है, और मैंने उनका एग्जामिनेशन भी लिया है। अगर ये 4 क्वाड्रेंट मैं करता हूँ देन आई विल गेट 12 मार्क्स, ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं कोलैबोरेशन में काम कर सकता हूँ। मैंने एक कोर्स जो था मैंने 2 या 3 लोगों के साथ में कोलैबोरेशन में डेवलप किया, तो हर मॉड्यूल के लिए 4 क्वाड्रेंट में अगर मैंने डेवलप किया, अभी ई कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ई कंटेंट के 4 क्वाड्रेंट है। सबसे पहला है ई टेक्स्ट, ओके। दूसरा है ई ट्यूटोरियल जहाँ पे वीडियो है। तीसरा है हमारा वेब रिसोर्सेस, दैट इज एडिशनल रीडिंग मटेरियल। और चौथा है सेल्फ असेसमेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट में अगर मैंने काम किया है एक मॉड्यूल के लिए तो मुझे 5 मार्क्स मिलते हैं, ओके। और फिर से मैंने अगर हर मॉड्यूल अगर मैंने क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया तो एक क्वाड्रेंट के लिए मुझे फिर से 2 मार्क्स मिलेंगे। एंड इफ आई एम द एडिटर ऑफ दिस ई कंटेंट देन आई एम एलिजिबल टू गेट 10 मार्क्स। सो आई होप कि अगर कोई क्वेरीज होंगी आपके माइंड में कि जो भी आपने ई कंटेंट्स किए हैं, तो ई कंटेंट आप कब क्लेम कर पाओगे? अगर आपके 4 क्वाड्रेंट्स आप प्रोवाइड कर सकते हो तो। Now, is there any query related to this? Because I often get queries on this particular topic. If at all there are some, please you may ask me query. Otherwise, I will move ahead. Okay, fine. So I assume that there are no queries. तो अगर आपने ई कंटेंट बनाए हैं तो आप ये ई कंटेंट रखोगे कहाँ पर फिर? 4 क्वाड्रेंट में आपको बनाने हैं तो 4 क्वाड्रेंट मिलेंगे कहाँ पे? व्हाट्सएप पे तो मिल नहीं रहे आपको, फेसबुक पे नहीं मिल रहे, यूट्यूब पे नहीं मिल रहे,
तो जो मैंने पहले एक स्लाइड देखा था लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, तो आपके कॉलेज में अगर एलएमएस है, आपका कॉलेज का अगर ऑफिशियली आप गूगल का एलएमएस अगर ले रहे हो, गूगल क्लासरूम, तो यू कैन क्लेम देयर, आपको आपके प्रिंसिपल ने सर्टिफाई करना चाहिए. ओके, सो देयर यू कैन सर्टनली क्लेम दिस वन. ओके, तो नाउ लेट्स से कि मैं ऐसे अज्यूम करता हूँ कि यू हैव इंस्पायर्ड एंड यू हैव डिसाइडेड टू डिजाइन योर ओन मूक. अगर आपने डिसाइड किया कि मूक डेवलप करना है तो उसका लाइफ साइकिल सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं. दिस इज द लाइफ साइकिल. सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो मैंने नेशनल मूक कोऑर्डिनेटर दिखाए थे आपको, जो भी मूक डेवलप करने वाला है उसको आपको अप्रोच होना है, उसको प्रपोजल सबमिट करना है. अलॉन्ग विद दिस प्रपोजल यू मस्ट बी सेंडिंग ए कंसेंट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, राइट. आप सब लोगों को एमआरपी का प्रोसीजर मालूम है, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट हो या माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट हो. तो आपको क्या करना पड़ता है, जो भी फंडिंग एजेंसी है, यूजीसी हो या डीएसटी हो, इनका जो भी फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में आपको प्रपोजल सेंड करना पड़ता है यूनिवर्सिटी के थ्रू, राइट. तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है. एक स्पेसिफिक प्रपोजल का फॉर्मेट होता है, उसमें आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू सबमिट करना है. आफ्टर इवेल्युएशन आपको अगर अप्रूवल मिलता है नेशनल मूक कोऑर्डिनेटर से, तो आपको इसके डेवलप करने के लिए फंड्स भी मिलते हैं. नाउ यू विल बी सरप्राइज टू नो द अमाउंट ऑफ फंडिंग फॉर डेवलपिंग वन मूक. अगर मैं स्वयं के बारे में बोलता हूं तो यू विल बी गेटिंग 15 to 16 लाख रुपीज फॉर डेवलपिंग ए सिंगल मूक. एक मूक डेवलप करने के लिए आपको इतना सारा फंडिंग आपके नेशनल मूक कोऑर्डिनेटर से मिलता है. यहाँ पे आपका एमओयू होता है एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स आपका कोर्स डेवलपमेंट शुरू होता है, राइट. तो जो भी 4 क्वाड्रेंट है, चारों क्वाड्रेंट में आप कोर्स डेवलप करोगे. वंस द एंटायर कोर्स इज डेवलप, ओके, जितना भी कोर्स था आपका, जो भी सिलेबस आपने बताया था, वो कोर्स पूरा डेवलप होने के बाद वो पूरे कंटेंट्स विल बी अपलोडेड एंड द मूक प्लेटफॉर्म विल अनाउंस दैट दिस कोर्स इज अवेलेबल फॉर एनरोलमेंट एंड देन द स्टूडेंट एनरोलमेंट विल बिगिन. फिर आपका कोर्स अपलोड हो गया, जो भी मूक प्लेटफॉर्म है वहां पे स्टूडेंट एनरोल करेंगे एंड देन द कोर्स विल स्टार्ट. यहाँ पे कोर्स शुरू हो गया. वंस द कोर्स स्टार्ट्स, आपको क्या करना है, आपको स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करना है. स्टूडेंट के जो भी एक्टिविटीज है, जैसे मैंने बताया कि इट इज ए इंटरेक्टिव कोर्स. ओके, स्टूडेंट में आस्क यू सम क्वेरीज, आपको क्वेरीज का आंसर देना है, आपको स्टूडेंट्स के असेसमेंट कराना है, उनसे एग्जामिनेशन लेना है आपको. ये सब कुछ करने के बाद एंड में होगा आपका प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन. तो आपके कोर्स के लिए एक एग्जामिनेशन लेगा स्वयं. ओके, जो एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके स्टूडेंट्स अपनी एग्जामिनेशन देंगे. और अगर स्टूडेंट्स पास होते हैं, दोनों इंटरनल असेसमेंट जो आपने किया और फाइनल एग्जामिनेशन जो स्वयं ने लिया, ओके, दोनों में से अगर वो पास होते हैं तो सर्टिफिकेट भी स्टूडेंट को अवार्ड होगा एंड देन द स्टूडेंट विल गेट ए क्रेडिट ट्रांसफर ऑल्सो. सो दिस इज द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ मूक. यही थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है. आई विल स्लाइटली गो फास्टर. आपको प्रपोजल सबमिट करना है. इसमें क्या होगा, आपके ओवरव्यू है, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, आपका डिलीवरी मोड क्या है. ओके, अप्रूवल होने के बाद एमओयू होगा, फंड्स आपको मिलेंगे, राइट. जब आप प्रपोजल सेंड करोगे तो आपको आपके यूनिवर्सिटी के साथ में कंसेंट भी सेंड करना है. यहाँ पे अभी एक बार आपका अप्रूवल मिल गया कि फिर आपको कोर्स डेवलप शुरू करना है. यहाँ पे फिर आपको अभी डिसाइड करना है कि आपका कोर्स का ड्यूरेशन कितना है. अगर वो 10 वीक्स का है, 16 वीक्स का है, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान. हर कोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इंट्रोडक्टरी वीडियो, ओवरऑल कोर्स इंट्रोडक्शन. ये डिपेंडिंग अपॉन द नेशनल मूक कोऑर्डिनेटर, ये 3 से 5 मिनट का वीडियो आपको बना के देना पड़ता है. जो भी आपके कंटेंट्स आएंगे, ओके, सी द मूक कोर्सेस आर ऑफर्ड ऑन वीकली बेसिस. हर वीक, हर हफ्ते में नए कंटेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं. तो जैसे हम लोग क्लासरूम में जाते हैं ना, तो क्लासरूम में जाते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. तो शुरू में सबसे पहले हम क्या बताते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, और एट द एंड हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है. सो हर वीक में आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी डालना है. 2 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. बाकी एक्टिविटीज और असाइनमेंट्स है, एमसीक्यूज हो सकते हैं. देन आपका कोर्स का अनाउंसमेंट हो गया, आपने अपलोड कर दिया,
कोर्स अनाउंस हो गया आपका और सबके पास आपके कोर्स की इंफॉर्मेशन चली गई यहाँ पे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज नाउ द स्टूडेंट एनरोलमेंट। आपका जो कोर्स है उसमें पूरे वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो पूरे देश से कहीं से भी स्टूडेंट आपके कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको भी इसका एडवर्टाइज करना है। नाउ सी, एज वी हैव मेंशन कि मूक वाला जो कोर्स होता है, इसके जो लर्नर्स होते हैं दे आर मैसिव इन नंबर, बहुत ज्यादा हो सकते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स माइट बी देयर। तो आप अकेले तो हैंडल नहीं कर सकते, तो उसमें प्रोविजन है। आपको यहाँ पे टीचिंग असिस्टेंट मिलते हैं, आपको कोर्स कोऑर्डिनेटर्स भी इनका असिस्टेंस आपको मिल सकता है। ओके, देन जो मैंने बताया आपको कि स्टूडेंट के साथ में आपको इंटरेक्शन करते रहना है, उनको नोटिफाई करते रहना है। वो सब होने के बाद एंड में एक प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन होगा। ओके, नाउ ये प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करता है? देयर आर सम प्रोफेशनल टेस्टिंग एजेंसीज लाइक एनटीए। एनटीए हमें मालूम है, इस तरह की एजेंसीज ये सब कोर्सेज कंडक्ट करते हैं। केयूर जी, आपका माइक ऑन है, केयूर जी, थैंक यू। तो एनटीए जैसे कोर्स एजेंसी जो है ये उसको कंडक्ट करते हैं। एंड देन द स्टूडेंट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। once they pass the examination, उनके जो credits है, these credits are transferred to their mark sheets, right? So this is the life cycle of MOOCs. Okay, अभी MOOCs का फॉर्मेट कैसा है वो थोड़ा हम लोग देख लेंगे पहले। दिस इज द फॉर्मेट, ये जो सामने दिख रहा है आपको, दिस इज द अबाउट द कोर्स। ये जो स्क्रीनशॉट अब मैंने दिखाए है आपको यहाँ पे, दीज आर द स्क्रीनशॉट्स अबाउट द कोर्सेज दैट वी हैव डेवलप्ड। ये स्किल्स फॉर न्यू एजुकेशनल आर्किटेक्चर, ये हम लोगों का कोर्स था जो हमने ऑफर किया है। तो स्क्रीन पे आपको ये कोर्स की अबाउट इंफॉर्मेशन है। राइट साइड में जो दिख रहा है, दिस इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो, 5 मिनट का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। लेफ्ट साइड में आपको कोर्स के आउटलाइन दिख रही है, जो भी टॉपिक्स है यहाँ पे वो टॉपिक्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देन दिस इज द क्वाड्रेंट नंबर 1. Quadrant 1 was e-tutorial where the video lectures of the learners are included. Okay. Secondly, this is the quadrant number 2, e-text, जहाँ पे हमने reading material दिया है. These are the PDF files the students can download and read these files. Then this is the discussion forum, quadrant number 3, जहाँ पे student का interaction होगा. और चौथा जो था assessment वाला part. So you can see here, जहां पे नीचे एक असाइनमेंट दिया गया है स्टूडेंट्स को, तो दिस इज द क्वाड्रेंट नंबर 4. तो दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ ए MOOC कोर्स. ओके, द स्टूडेंट्स कैन व्यू देयर लर्निंग प्रोग्रेस ऑल्सो. नाउ व्हाट आर द गाइडलाइंस? जो हमारा टॉपिक था, एक विद इन 10 मिनट्स आई विल बी गोइंग थ्रू दिस गाइडलाइंस. तो एक एडी मॉडल है ई कंटेंट डेवलपमेंट के लिए, जिसमें 5 स्टेप होते हैं: एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन. थोड़ा आई वुड लाइक यू टू रियली फोकस ऑन व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स. तो ये जो मॉडल है, ये आपको जो डे टू डे लेक्चर्स लेते हो आप, जिसके लिए आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हो या तो फिर आपके PDF फाइल बनाते हो, डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हो, तो उसमें हम तो काफी सालों से बनाते आ रहे हैं. अगर आप ये जो 5 स्टेप्स अगर फॉलो करते हो, तो बिलीव मी, जो भी ई कंटेंट्स आप बनाने जा रहे हो, इवन इफ इट इज अ सिंपल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो भी वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनेगा. सो लेट्स सी व्हाट आर दीस स्टेप्स. सो एनालिसिस इज 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस फॉर द फर्स्ट टॉपिक. सबसे पहला है नीड्स एनालिसिस और दूसरा है टारगेट ऑडियंस एनालिसिस. नीड एनालिसिस मतलब हम जो भी कंटेंट तैयार करने जा रहे हैं, ई कंटेंट तैयार करने जा रहे हैं, या तो MOOCs तैयार करने जा रहे हैं. ओके, सो आई हैव टू आइडेंटिफाई द जनरल एंड हाई लेवल कोर्स गोल्स. ओके, आई हैव टू एग्जामाइन द सुटेबिलिटी ऑफ द ई कंटेंट टू बी डेवलप. अगर मैं ये डेवलप करता हूं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ओके, क्या होगा? हाउ सुटेबल दे विल बी टू द लर्नर. अगर लर्नर्स ये कोर्स पढ़ते हैं तो उनको क्या बेनिफिट होगा, ये पहले मुझे एनालाइज करना पड़ेगा. सेकंड थिंग इज टारगेट ऑडियंस एनालिसिस. ये बहुत जरूरी एनालिसिस है. आई वुड लाइक टू गिव यू वन एग्जांपल. आई एम ए टीचर ऑफ कंप्यूटर साइंस.
तो अगर मुझे किसी ने बताया कि आपको सर एक इंटरनेट सिक्योरिटी पे आपको एक लेक्चर देना है, ओके, इंटरनेट सिक्योरिटी पे, तो मैं क्या करूंगा कि ओके आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग माय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मैंने मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन करना शुरू कर दिया, ओके, और ये बहुत अच्छा सा मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया, एंड देन आई वेंट टू द प्लेस वेयर माय लेक्चर इज, ओके। वहां जाके मुझे पता चला कि जो लेक्चर मुझे देना है दैट इज टू बी डिलीवर्ड इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 एंड क्लास 5। जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं ना, चौथी पांचवी के बच्चे, उनके लिए मुझे इंटरनेट सिक्योरिटी पे बात करना है। तो अभी क्या होगा कि मेरा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें तो मैंने कुछ टेक्निकल चीजें ऐड करके रखी है। इज इट रियली यूजफुल फॉर देम? नहीं, तो मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो यूजलेस बन गया। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि जो लर्नर्स है उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उनका प्रीवियस नॉलेज क्या है, राइट? ओके, तो अगर वो स्टूडेंट्स है प्राइमरी के, तो मुझे क्या पढ़ाना है कि अच्छा ठीक है कि इंटरनेट क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कि अच्छा ये सब हो सकता है इंटरनेट पे। तो धीरे से मैं क्या बताऊंगा, अरे नहीं इतना ही नहीं है, इसके साथ में कुछ थ्रेड्स भी है, राइट? तो फिर मैं इंटरनेट पे क्या थ्रेड्स है, व्हाट मे बी रॉन्ग विथ यूजिंग इंटरनेट, ये सब बताऊंगा। और जो मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं रहेगा, और जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा ना उसमें कुछ बहुत बढ़िया एनालिसिस होंगे, एनिमेशंस होंगे कार्टून्स के माध्यम से, राइट? काफी सारे स्माइलीज और कार्टून्स वगैरह मैं ऐड करूंगा, सो दैट इट विल बिकम मोर इंटरटेनिंग टू दैट स्कूल गोइंग किड्स, राइट? ये हो गया स्कूल किड्स के लिए। Now let's say I have to design the PowerPoint presentation for the same topic for the students of undergraduate humanities, मतलब BA BCom के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुझे ये सेम लेक्चर देना है। तो अभी जो मेरा PowerPoint प्रेजेंटेशन होगा दैट विल बी वेरी मच डिफरेंट। तो यहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा टेक्निकल आएगा, बहुत ज्यादा कार्टून्स नहीं यूज करूंगा, तो बच्चों के सामने थोड़ी ना दिखा रहा हूँ, तो थोड़े बहुत तो रहेंगे, ओके, इंटरटेनमेंट के लिए, बट इट विल बी समव्हाट टेक्निकल, राइट? थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल होगा। नाउ लेट अस इमेजिन कि मुझे सेम टॉपिक पे लेक्चर देना है बीटेक के जो स्टूडेंट्स है, बीटेक, राइट? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए अगर मुझे लेक्चर देना है, तो नाउ सी द कंटेंट्स दैट आई विल बी एडिंग टू माय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वुड बी हाईली टेक्निकल, राइट? तो जो बेसिक है, व्हाट इज इंटरनेट एंड व्हाट आर द थ्रेड्स, तो ये सब नहीं रहेगा। अभी इसमें शायद अल्गोरिथम्स होंगे, ओके, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करूंगा, वगैरह वगैरह। सो सी, मैंने एक छोटा सा टॉपिक पे डिस्कस किया, लेकिन द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू डिसाइड इज व्हाट आर माय टारगेट ऑडियंस, एंड दैट इज वेरी इसेंशियली चेक्ड व्हेन यू आर सबमिटिंग द प्रपोजल। जब आप प्रपोजल सबमिट करते हो मूक्स का, तो ये टारगेट ऑडियंस बहुत अच्छे से आपका चेक किया जाता है। देन आई विल टॉक अबाउट डिजाइन, फॉर्मुलेटिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आप जितने भी, अगर आपने कोई सिलेबस अगर डिजाइन किया है तो आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 100% दिए हैं, तो वैसे ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपको हर कोर्स के लिए यहाँ पे भी देने हैं। देन यू हैव टू स्ट्रक्चर द कंटेंट इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। आप जब सिलेबस बनाते हो ना, तो लेट्स से देयर आर 6 यूनिट्स, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 6 यूनिट्स। पहला जो यूनिट होता है दैट इज इंट्रोडक्टरी, फिर सेकंड यूनिट जो होता है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थर्ड यूनिट उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसमें जो होता है ना, तो एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है। आई कैन नॉट डायरेक्टली स्टार्ट टीचिंग यूनिट नंबर 3। ऐसा कभी हुआ है क्या? आपने सिलेबस पढ़ाना शुरू किया एंड यू स्टार्टेड विद यूनिट नंबर 3 एंड देन यू स्टार्टेड यूनिट नंबर 1, देन यू स्टार्टेड यूनिट नंबर 6? ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस जो डिजाइन होता है ना, एक लॉजिकल सीक्वेंस में होता है। तो वैसे ही आपको डिजाइन यहाँ पे भी करना है। यू हैव टू स्पेसिफाई द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज। तो व्हाट आर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज? कुछ टॉपिक जो होते हैं ना, वो सिर्फ मैं लेक्चर देके मैं पढ़ा सकता हूँ। मैं आई विल बी टॉकिंग ओनली एंड देन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ लेट्स से आई एम ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, आई एम ए टीचर ऑफ ज्योग्राफी। ओके, तो नॉर्मल टॉपिक तो मैंने पढ़ा दिया। अभी मुझे क्या करना था कि मुझे सोलर एक्लिप्स पढ़ा रहा हूं मैं। ओके, तो थ्योरेटिकली मैंने बता दिया कि हाउ सोलर एक्लिप्स हैपन, बट मुझे क्या करना है अभी कि आई वांट टू टीच अबाउट द टोटल सोलर एक्लिप्स एंड आई वांट टू टॉक अबाउट अ डायमंड रिंग।
डायमंड रिंग उनको बताना है मुझे। सो मैं कितना भी ओरली मैं कितना भी बताऊं, जब तक द स्टूडेंट्स डू नॉट सी दैट डायमंड रिंग इन द सोलर इक्लिप्स, उनको तो वो पता ही नहीं चलेगा ना। तो हाउ कैन आई सी इट? तो ये तो ऐसा नहीं है कि मैं चलो लैब में जाके हम लोग सोलर इक्लिप्स देखते हैं, ये भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मुझे एक सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि जो पुराने सोलर इक्लिप्स हुए हैं उसका वीडियो मैं यहाँ पे स्टूडेंट को दिखाऊंगा। तो ये हो गई मेरी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी। So instructional strategy, whether it is a sole video of the teacher, okay, मतलब ओनली टीचर दिख रहा है स्क्रीन पे, या तो फिर टीचर है, टीचर के साथ में पावर पॉइंट का स्क्रीन भी दिख रहा है, स्लाइड दिख रहा है, टीचर है, टीचर के साइड में एक एनिमेशन हो रहा है, ग्राफिक्स दिख रहा है, या तो फिर टीचर नहीं दिख रहा, सिर्फ वीडियो दिख रहा है। दीज आर ऑल द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज। तो हमें वो डिसाइड करके रखने पड़ेंगे पहले से कि मेरे इतने सारे टॉपिक्स है, देयर आर 50 टॉपिक्स। आउट ऑफ 50 टॉपिक्स ये वाला टॉपिक मैं खुद अकेला पढ़ाऊंगा, ये वाले टॉपिक में मैं स्लाइड दिखाऊंगा, ये वाले टॉपिक में एनिमेशन दिखाऊंगा, ये वाले टॉपिक में वीडियो दिखाऊंगा। दीज आर द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज एंड यू हैव टू डिजाइन इट इन एडवांस। मुझे एडवांस में ये डिसाइड करके रखना है। सेकंड, मैं जो भी डिलीवर करने जा रहा हूँ, इन व्हाट सीक्वेंस आई एम गोइंग टू डिलीवर, इन व्हाट ऑर्डर आई एम गोइंग टू डिलीवर, ये मुझे डिसाइड करके रखना है। इवेल्युएशन स्ट्रेटेजी, कौन से टॉपिक के लिए मुझे किस प्रकार का इवेल्युएशन स्ट्रेटेजी डिसाइड करना है। तो कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें एमसीक्यू में ले सकता हूं, लेकिन देयर आर सम टॉपिक्स वेयर एमसीक्यू इज नॉट पॉसिबल, मुझे वहां पर असाइनमेंट देनी है स्टूडेंट को। ओके, तो दैट स्ट्रेटेजी यू हैव टू डिजाइन। नेक्स्ट वन इज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर विजुअल डिजाइन। विजुअल मतलब जो भी ई कंटेंट आप डिजाइन करने जा रहे हो, तो आपका इवन आपका अकेला का वीडियो भी होगा ना, तो आपके बैकग्राउंड में आपको क्या दिखाना है, वेदर इट विल बी ए वॉल, ओके, ये जो अभी आपको स्क्रीन मेरे पीछे जो दिख रहा है वैसे ही दिखाना है, या तो फिर उसमें कुछ तो भी बहुत बढ़िया सा बैकग्राउंड आपको ऐड करना है। आपके जो स्लाइड है उसका बैकग्राउंड कैसा होगा, उसका फॉन्ट साइज क्या होगा, राइट, वीडियो कैसा होगा, ये सब कुछ विजुअल डिजाइन और टेक्निकल डिजाइन यू हैव टू मेक इन एडवांस। नाउ द आउटकम ऑफ दिस स्टेप इज द ब्लूप्रिंट। ये जो स्टेप है ना बहुत ज्यादा इसेंशियल है, एंड दैट्स व्हाई आई हैव स्पेंट मोर टाइम हियर आल्सो। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा स्पेंड करना है टाइम। जैसे आप घर बनाते हो ना, कंस्ट्रक्शन करते हो, तो सबसे पहले आप एक आर्किटेक्चर से प्लान बना के लाते हो, तो वैसे ही प्लान ये वाला भी है, एंड यू हैव टू फॉलो दैट। नाउ डेवलपमेंट इज वेयर द एक्चुअल प्रोडक्शन यू हैव टू डिजाइन, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इम्प्लीमेंटेशन, अभी आपने कोर्स डेवलप कर लिया है, नेक्स्ट स्टेजेस आपको वो स्टूडेंट्स के साथ में, लर्नर्स के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। पांचवा है इवेल्युएशन। नाउ व्हेन इट कम्स टू इवेल्युएशन एज ए टीचर, हमें क्या लगता है कि इवेल्युएशन मतलब इवेल्युएशन ऑफ द लर्नर। नो, दिस इवेल्युएशन इज ए स्टेज वेयर वी डिटरमाइन द एडिक्वेसी ऑफ योर मटेरियल। जो मटेरियल आपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर किया है, वेदर इट इज एडिक्वेट और नॉट, तो हमें ये इवेल्युएट करना है। अगर जरूरत पड़ती है तो उसको रिवाइज करना है बेस्ड ऑन द दिस वन। ये हमने प्रोसीजर देख लिया है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अगर आपने डिसाइड किया कि चलो मूक हमें बनाना है, तो हमें क्या करना है। सबसे पहली चीज आपको अगर तैरना है तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, अगर आपको मूक बनाना है तो सबसे पहले यू रजिस्टर टू सम मूक कोर्सेज एज ए लर्नर करके रजिस्टर करो और उसको पूरा करो, आप एक्सपीरियंस लो। ओके, देन यू डिसाइड ए पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ योर चॉइस, जहां पे आप एक्सपर्टाइज है आपका। आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया, नेक्स्ट थिंग जो मैंने बताया आपको, टारगेट ऑडियंस, वो आपको यहाँ पे चूज करना है कि किसके लिए बना रहे हैं हम लोग। देन सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, आपको बिल्ड करनी पड़ेगी एक टीम। आप अकेले का काम नहीं है मूक डिजाइन, तो आपको एकेडमिशियन लगेंगे, आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट लगेंगे, आपको वीडियोग्राफर लगेगा, आपको पूरा स्टूडियो का जो क्रू होता है वो लगेगा, वीडियो एडिटिंग के लिए लोग लगेंगे, लॉट मेनी पीपल। तो ये टीम आपको बनानी पड़ेगी। कोर्स का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, आपको एजुकेशनल प्लान आपको बनाना है यहाँ पे। बाद में ये सब होने के बाद में आपको आपके वीडियो और जो भी अदर ई कंटेंट है उसको प्रोडक्शन कराना है आपको। देन जो कुछ भी आप डेवलप करोगे, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है कि यू हैव टू चेक फॉर द क्वालिटी। एकेडमिकली इट शुड बी ए वेरी क्वालिटी प्रोडक्ट, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी ऑनलाइन। आप जो भी डिजाइन करने जा रहे हो वो वर्ल्ड वाइड एक्सेस होने वाला है।
तो इट शुड नॉट बी प्लागराइज, सबसे बड़ी बात। और टेक्निकल भी आपको क्वालिटी चेक करनी है। देन आपको प्रमोशन करना है आपके कोर्स का। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू कम्युनिकेट विथ योर लर्नर्स। असेसमेंट आपको स्टूडेंट्स का कराना है, कोर्स का रिव्यू आपको लेना है थ्रू फीडबैक। ओके, सो दीज आर द स्टेजेस। सबसे पहला प्रपोजल, आपको प्रपोजल सबमिट करना है। अगर आपका प्रपोजल सैंक्शन होता है तो कोर्स डेवलप करना है। डेवलप होने के बाद आपको खुद के कोर्स का प्रमोशन करना है, कोर्स का डिलीवरी करना है और लर्नर के साथ में इंटरेक्ट करना है। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, तो जो कोर्स का आप प्रपोजल देने वाले हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका प्रमोशनल वीडियो। एक जो 3 से 5 मिनट का वीडियो है उसमें क्या क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन टू योर टॉपिक, कौन से टॉपिक्स आप कवर करने वाले हो, व्हाट आर द मोड्स ऑफ असेसमेंट, ये सब कुछ आपके 5 मिनट के वीडियो में आना चाहिए। ये जो वीडियो है दिस शुड नॉट बी ए मोनोटोनस वीडियो, इसमें आपको मल्टीमीडिया मिक्सिंग करने हैं। तो मल्टीमीडिया मिक्स करना है मतलब ग्राफिक्स, एनिमेशन, फोटो, स्लाइड्स, ये हमें ऐड करना है, बट फॉर इलुस्ट्रेशन पर्पज ओनली। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ डालना है तो सब कुछ मैं डिजाइन करके रख दूंगा, नो। ओके, तो इलुस्ट्रेशन के पर्पज के लिए ही यूज करना है। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट द ड्यूरेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। आपका जो नेशनल मूक कोऑर्डिनेटर है वो बताते हैं आपको कि उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। तो यूजुअली इट इज बिटवीन 3 to 5 मिनट्स। सो इट इज समथिंग लाइक ए ट्रेलर ऑफ ए मूवी। आपने मूवी के ट्रेलर देखे होंगे। बिलीव मी, डिजाइनिंग ए मूक इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ डायरेक्टिंग ए मूवी। मूवी डायरेक्ट करने के इक्विवेलेंट है ये, राइट? तो आपका जो मूवी का ट्रेलर आपने देखा होगा, बहुत 2-3 मिनट का ट्रेलर होता है, लेकिन वो इतना बढ़िया होता है कि लोगों को लगता है कि चलो हमें ये मूवी जाके देखना चाहिए। तो एग्जैक्टली वैसा ही आपका ये इंट्रोडक्टरी वीडियो एक्सपेक्टेड है। एंड दिस इज द प्राइमरी एस्पेक्ट इन द इवेल्युएशन ऑफ योर प्रपोजल। आपका जो प्रपोजल आप सबमिट करते हो ना, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर कोई है तो ये वाला वीडियो है आपका, राइट? सो दैट्स व्हाई try to make it more informative and attractive, right? तो नाउ जो प्रपोजल की हम लोग बात कर रहे थे, दिस प्रपोजल्स आर कॉल्ड एज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। और जो भी आपके नेशनल मूक कोऑर्डिनेटर है वो इनवाइट करते हैं। नाउ व्हाट इज द एलिजिबिलिटी? अगर आपको मूक डेवलप करना है स्वयं पे, तो यू हैव टू बी ए फैकल्टी इन ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। नाउ विच इंस्टीट्यूट इज रिकॉग्नाइज्ड? अगर मैं यूजीसी के बारे में बात करूंगा तो 2F12B, ये जिसके पास है, दैट इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड एज रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। द फैकल्टी मेंबर मस्ट बी हैविंग ए PhD, डॉक्टरेट होना चाहिए, उनके पास 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट? ये सब अगर है तो यू आर एलिजिबल। नाउ जो आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रपोजल जो सबमिट करते हो उसके एस्पेक्ट क्या होते हैं इवैल्यूएशन से? ये जो है कोर्स ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, ऑब्वियसली दिस इज प्राइमरी एस्पेक्ट कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हो। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्वालिटी ऑफ द सैंपल वीडियो, दैट इज द प्रमोशनल इंट्रोडक्टरी वीडियो जो भी है। ओके, दैट इज अगेन ए सेकंड प्राइमरी एस्पेक्ट। ओके, उसके अलावा और भी कुछ एस्पेक्ट है। दीज आर सम ऑफ द स्क्रीनशॉट्स जहाँ पे प्रपोजल्स इनवाइट किए हैं। ये स्वयं का है, दिस इज फॉर CEC, दिस इज फ्रॉम EICT और दिस इज फ्रॉम NPTEL. So along with the MOOCs development, there is again a very good opportunity, and that opportunity is for course translation. MOOC course translation के लिए बहुत बढ़िया opportunity आपको available है. I will recommend you to go for translation projects. वो आपको screen पे दिख जाएगा यहाँ पे. So I would directly go to the last part here, because we are running out of the time. थोड़े टिप्स आपको बताना चाहूंगा, पॉइंट्स। आपको टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंड करनी चाहिए, शेड्यूल आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, फंड्स देखो आप, प्रमोशन और कॉपीराइट्स आपको देखने हैं। these are the screenshot of the स्टूडियो इन आवर कैंपस। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैमरा है, यहाँ पे लाइट्स है, यू कैन सी द ग्रीन स्क्रीन जिसे क्रोमा स्क्रीन बोलते हैं हम लोग। ये है भी यहाँ पे, यू कैन यूज ए टेलीप्रॉम्प्टर ऑल्सो, यहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर दिखाया गया है। यू कैन डेवलप एज पर योर कन्वीनियंस। ओके,
ये आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं मैं कि बैकग्राउंड में यहाँ पे ग्रीन कर्टन है और उसको हमने पीछे एक लाइब्रेरी का एक फोटो निकाला हमने एंड दैट फोटो इज एडेड, सो यू कैन सी द ग्रेस। जो मैंने बार बार बताया आपको कि आपके जो भी आप डेवलप करने जा रहे हो वीडियो, अगर इस तरह से आप उसको एडिट करते हो तो दीज वीडियोस बिकम वेरी वंडरफुल। ओके, सो आई एम श्योर वी आर एट द एंड, 6 बज चुके हैं, so I would like to conclude here. These are some of the references that I have taken for developing this particular presentation. So जो मैंने शुरुआत किया था कि the pedagogy is changing, traditional से हम लोग modern pedagogy में आ रहे हैं, and there is a change which is happening in our teaching learning system. So you should look it as a chance. हम अगर chance करके उसकी तरफ देख रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आर यू रेडी टू एक्सेप्ट दिस चेंजेस, राइट? सो इफ एट ऑल देयर आर क्वेश्चंस, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you so much for such an insightful session on this SWAYAM, because it is very urgent need that every faculty should undergo to develop the courses on this SWAYAM. Not only on this SWAYAM, there are n number of platforms are available. So you have provided a roadmap and strategy how to develop the courses. We are really thankful to you, sir. Yes, participants, the forum is open for discussion. The question, if you has any kind of questions or the queries, you can directly ask to Professor Pachpande, sir. Please, anyone. Some of the participants are demanded the PPT. Yes, I will be sharing it. Yes, sir. Yeah. Yes, anyone? Yes, Dr. Chaudhary, sir. Dr. Nitin Chaudhary, sir. Is there any question? We are really happy if there are some kind of queries or the question, or if you have anyone any kind of observation, you can please mention here. हेलो सर। Yes, please, Saturvar sir. हाँ सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये मूक डेवलप करना है तो अपने रेगुलर पीरियड और जो बाकी का सिखाने का काम है, पढ़ाने का काम है, वो छोड़ के अलग एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा हमें। यस यस, ये आपको एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करके देना पड़ेगा ये, बिकॉज दैट इज एडिशनल एक्टिविटी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मूक्स के लिए जो वीडियो बनाने हैं उसकी कुछ फॉर्मेट है, रिजोल्यूशन से लेके सभी कैमरे के टाइप, उसके बारे में कुछ डिटेल्स सर बता सकते हैं? Yes, there are some guidelines which are provided by स्वयं। तो ये गाइडलाइन भी मैं आपके साथ में शेयर कर लूंगा। देर आर लॉट्स ऑफ गाइडलाइंस विच आर स्पेसिफिकली गिवन बाय द मूक प्रोवाइडर्स। तो उसका रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए, उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। जो भी वीडियो हम बनाते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग 1 घंटे का वीडियो बना देते हैं, बट इट इज नॉट एक्सपेक्टेड। स्वयं क्या बोलता है कि आपके वीडियो 8 से 10 मिनट का होना चाहिए। द रिजोल्यूशन शुड बी 1920 बाय समथिंग, वो हाई रिजोल्यूशन जो बोलते हैं ना, HD वाला, वो रिजोल्यूशन होना चाहिए आपका, ग्लिचेस नहीं होने चाहिए। देर आर सम सॉर्ट ऑफ गाइडलाइंस दैट आर गिवन, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर लूंगा। Yes, Dr. Patrikar madam. हॅलो, हा नमस्कार सर. हा नमस्कार सर, आपल्या विद्यार्थ्यांना मूक कोर्सेसला कसं जॉईन करायचं? ओके, मूक कोर्सेस जे आहेत आपले, स्वयंवर मूक कोर्सेस अवेलेबल आहेत। आता 2 प्रकारे तुम्ही विद्यार्थ्यांना जॉईन करू शकतात। एक तर क्रेडिट ट्रान्सफर साठी जर करणार असाल तुम्ही, तर आपल्या बोर्ड ऑफ स्टडीज मधनं त्याला मान्यता असायला पाहिजे त्या कोर्सला, मग ते विद्यार्थी जॉईन होऊ शकतील। पण युजली मी काय करत असतो की ओके ठीक आहे की बोर्ड ऑफ स्टडीज सांगेल तेव्हा सांगेल, पण तुम्ही आधी जर जॉईन करू शकत असतील तर स्वयंवर वर्षातनं 2 वेळा स्वयं आपल्याला लिस्ट पाठवत असते, लिस्ट ऑफ कोर्सेस दॅट आर अवेलेबल। ठीक आहे, तर त्यांनी तिथे जाऊन तो सर्च करायचा कोर्स,
सर्च केल्यानंतर तिथे जॉईन नावाचं एक बटन असतं. जॉईनला क्लिक केल्यानंतर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन असतं, जसं कोणत्याही पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करतात विद्यार्थी त्या प्रकारे रजिस्टर केलं की त्यांना त्यांच्या लॉग इन मध्ये दर आठवड्याला नवीन कंटेंट्स दिसतात. त्याला क्लिक केलं की तो व्हिडिओ असेल तर व्हिडिओ प्ले होईल, आणि जर रीडिंग मटेरियल असेल तर ते डाउनलोड करून ते करू शकतात. ते पर्सनल राहील की आपल्या कॉलेजचं नाव राहील तिथं? नाही, कॉलेजचं नाव नाही राहणार. स्वयंवर ज्यांनी कोणी डेव्हलप केलेले ते, तुम्ही स्वतः जर स्वयंवर कोर्स डिझाईन केला तर तुमच्या कॉलेजचं नाव येऊ शकतं. मग त्यासाठी मी ही जी आज जी प्रोसिजर सांगितली ती तुम्हाला करायला लागेल. तुम्हाला प्रपोजल टाकून तो कोर्स डेव्हलप करायला लागेल. हेलो सर, नमस्ते। हाँ, नमस्कार सर। हाँ, अभी मूक्स के जो कोर्स है वो NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्टूडेंट को करना है सर, जैसा राइट। तो उसमें उसको रजिस्ट्रेशन किया तो चलेगा कि उसकी एग्जाम भी देना कंपलसरी रहेगा? एग्जाम विल बी कंपलसरी ऑब्वियसली, क्योंकि एनईपी में जो हमने ऐड किए हैं कोर्सेस बुक्स के, दे आर फॉर स्पेसिफिक क्रेडिट्स. कुछ कोर्सेज 2 क्रेडिट के लिए हमने रिकमेंड किए हैं, कुछ 4 क्रेडिट के लिए रिकमेंड किए हैं. तो उनको क्रेडिट कब मिलेंगे? जब वो पास होंगे तभी मिलेंगे. सिर्फ मियरली रजिस्टरिंग द कोर्स इज नॉट इनफ. तो उनको एग्जामिनेशन देके वो पास करना पड़ेगा. स्वयं की तरफ से उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आता है. तो these certificates and mark sheet have to be submitted to the college and college has to submit it to the university. तभी उनको वो मिलेगा. अदरवाइज फिर तो फायदा नहीं, फिर तो लोग सिर्फ रजिस्टर करके छोड़ देंगे, उसमें यूज नहीं होगा ना फिर. हाँ सर, थैंक यू सर. सर सर मूक्स की जो एग्जाम रहती है उसकी भी फी रहती है, उसको कोई ऑप्शन क्या, अदर कोई सोर्स है क्या सर, कि जो बच्चे फाइनेंशियल जो कंडीशन है अच्छी नहीं उनके लिए? यस सर, यस. ये सबसे बड़ा चैलेंज है मूक्स के पॉपुलराइजेशन में, कि होता क्या है कि द फीस इज एट दिस मोमेंट फीस बहुत ज्यादा है. अगर ओपन कैंडिडेट है तो उसको 1000 रुपीज है, और अगर कैटेगरी का है तो उसको 500 रुपीज है. तो ये चैलेंज है, लेकिन उसमें थोड़ा सा सोल्यूशन इस तरह से निकला है कि अगर वो स्टूडेंट अगर लाइक उनके कुछ रैंकिंग्स है, उस रैंकिंग्स में अगर आता है तो स्वयं इटसेल्फ गिव्स बैक द पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द फीस. उसको अगर वो गोल्ड रैंकिंग में आता है तो उसको 100% फीस बैक मिलती है और अकॉर्डिंगली मिलता है. लेकिन ये जो स्कॉलरशिप्स बोलते हैं उसको, वो सभी कोर्सेस में नहीं है एज ऑफ नाउ. कुछ स्पेसिफिक कोर्सेस है उसमें है. ये एक स्वयं की तरफ से दिया हुआ है. दूसरा प्रोविजन आप कॉलेज लेवल पे भी कर सकते हो. तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं कि जिन्होंने CSR फंड से ये प्रोविजन करके रखी है कि CSR फंड से दे आर पेइंग द फीस फॉर मूक कोर्सेस. तो इस तरह से फिलहाल तो भी आपको सोल्यूशन निकालना है. एंड राइट नाउ एज अंकित सर हैज इनिशियली टोल्ड, Maharashtra government is launching its own MOOCs platform and that is called as Mahaswayam. तो ये सब कुछ अभी just 2 days back we had a workshop with the ministry people. मिनिस्ट्री पीपल थे हमारे साथ में, तो उस वक्त भी मैंने ये डिस्कस किया उनके साथ में कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि 500 and 1000 रुपीज उनको देना, दैट बिकम्स ए बिग टास्क. तो उस लेवल पे भी उनकी चर्चा चल रही है. महास्वयं शायद विल बी ए गुड सॉल्यूशन. उसके आगे जाके भी एक और रिजोल्यूशन उसमें आ रहा है. विद इन फ्यू मंथ्स इट विल बी डिक्लेयर्ड कि लोकली मूक्स कोर्सेज भी हम लोग डेवलप कर पाएंगे. बट आई विल नॉट टॉक ऑन दिस राइट नाउ ऑथेंटिकली. जब वो आ जाएगा तो इसमें और भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा टास्क. सर अगर कोई कोर्स हमने मूक्स के लिए बनाया तो उसकी फी रहेंगी क्या? अगर हमने फी अगर नहीं रखी, या उसमें कोई चांस है कि फी में कुछ कम हम कर सकते हैं? हमने डिजाइन किया तो हाँ, यस सर, यस सर. हाँ, तो यू विल बी डिजाइनिंग द मूक कोर्स फॉर स्वयं. नो, स्वयं पे ही बनाओगे तो स्वयं के जो रूल्स है वो बाय डिफॉल्ट उसको अप्लाई हो जाएंगे. जो फीस है आपकी 500 और 1000 एग्जामिनेशन की बोल रहा हूँ मैं. सिर्फ अगर कोर्स ज्वाइन करना है उसको और सीखना है, उसको सर्टिफिकेट अगर नहीं चाहिए तो आपको तो कोई फीस देनी ही नहीं है. बट उसको अगर एग्जामिनेशन देना है तो उसको फीस देनी पड़ेगी. बिकॉज एज ऑफ नाउ स्वयं के जितने भी एग्जामिनेशन है दोज आर कंडक्टेड बाय NTA, और NTA की फीस है अनफॉर्चुनेटली थोड़ी ज्यादा है.
तो उसी पे मैंने जो बताया कि द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दैट. ओके सर, थैंक यू सर. Yes, sir. I'm हाँ Dr. बोलिए. Rajkumar Sharma. बोलिए सर. Sir, regarding the fees, we can give any proposal to NPTL or this MOOC for reducing the fees, because our students are from our area and they Yes. can't. That means we are taking admission of the students only in rupees 25. So how they are Right. going to be afford? Yes, yes. See sir, what you can do, no, as a collective representation, अगर सभी कॉलेजेस में इस तरह का रिप्रेजेंटेशन जाता है, स्वयं वो एनपीटीएल को नहीं जाना चाहिए, मिनिस्ट्री को जाना चाहिए कि व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग. सी जस्ट फ्यू डेज बैक यूजीसी के चेयरमैन ने एक वेबिनार लिया था जहां पे उन्होंने सबसे डिस्कस किया था व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग. तो उसमें भी ये पॉइंट आया था. तो सभी कॉलेजेस की तरफ से अगर ये रिप्रेजेंटेशन जाता है मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को और यूजीसी एआईसीटीई को, तो सर्टेनली दे विल थिंक ओवर दिस. और हम लोग नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग आवर यूनिवर्सिटी, तो हमारा तो इंटरेक्शन होता है काफी बार, तो हर इंटरेक्शन में हम लोग ये इश्यू रेज करते ही है. ओके, बट जैसे ही आवाज बढ़ेगी तो शायद हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस आएंगे. Send one proposal, या through university. कौन सा प्रपोजल बोल रहे हैं सर आप? Reducing the fees of MOOC. हाँ नहीं, तो यूनिवर्सिटी के थ्रू सेंड करने की जरूरत नहीं सर आपको. यू कैन सेंड इट ऑन योर ओन बिहाफ आल्सो. ये तो जस्ट एक सजेशन रहेगा ना सर कि व्हाट चैलेंजेस यू आर फेसिंग. आपको बताना पड़ेगा कि वी आर विलिंग, कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स भी एनपीटीएल के कोर्सेज करें, बट देन फ्रॉम देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो यानी इसके अंदर फ्री कोर्सेज करके. एग्जामिनेशन के लिए फ्री कुछ भी नहीं है सर. बाकी कोर्सेज तो पूरे फ्री है. कोर्सेस, ऑल कोर्सेस आर फ्री. उनको सिर्फ लर्निंग अगर करना है ना तो उनको पैसे नहीं देने. लेकिन अगर उनको सर्टिफिकेट चाहिए, क्रेडिट ट्रांसफर चाहिए, तो फीस इज देयर. उनको एग्जामिनेशन का फीस में कुछ फी वेवर स्कीम है, जो मैंने अभी बताया ना कि फी वेवर स्कीम इज देयर, बट इट इज लिमिटेड. बहुत कम स्टूडेंट्स को मिलती है. जैसे स्कॉलरशिप होता है ना, सभी को नहीं मिलता स्कॉलरशिप, तो उसी तरह का वो है, लेकिन इट इज लिमिटेड. तो ऑन योर ओन कॉलेज लेवल पे आप, जैसे मैंने अभी बताया सीएसआर फंड था, तो उस तरह का अगर कोई फंड आप रेज कर सकते हो तो दैट इज वन ऑप्शन, जो हमने दिया भी था और कुछ कॉलेजेस ने किया भी था. सर, हमें डायरेक्टर का जो मेल आईडी है अगर आप देते हो तो हम कॉमनली उसे मेल कर सकते हैं एक फॉर्मेट बना के रिक्वेस्ट के लिए. डायरेक्टर कौन से डायरेक्टर सर? सर, ये फी कम करने के लिए जो भी मेल आईडी है, अगर वह आप हमें देते हैं तो एक फॉर्मेट बना के हम सभी इंडिविजुअली उसको उस मेल पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं. नहीं सर, एक स्पेसिफिक डायरेक्टर वगैरह ऐसे तो कोई नहीं. मैंने जस्ट जैसे बताया आपको, यू कैन सेंड इट टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यू कैन सेंड इट टू यूजीसी, यू कैन सेंड इट टू एआईसीटी. यूजीसी के चेयरमैन को सेंड करो आप, यूजीसी के एआईसीटी के चेयरमैन को सेंड करो आप, मिनिस्ट्री जो है एजुकेशन की उनको सेंड करो. ओके, सो अगर उनको लगता है तो दे मे थिंक ओवर दिस. और वैसे हम लोग तो इंटरेक्शन में बताते ही है. एंड दे आर थिंकिंग पॉजिटिवली, क्योंकि ये जो बातें हैं ना, ये काफी बार उन तक पहुंच रही है. दे आर थिंकिंग पॉजिटिवली ऑन दिस. Yes, is there any other questions of the queries? No sir, thank you. Very nice presentation, sir. Thank you very much. Thank you sir, very nice presentation. So Thank you. shall we conclude, sir, if you could permit? Yes sir, yes. So we are really thankful to you, Professor Suhas Pachpande sir, for being with us, enlighten us, sir. Within couple of time you have described the entire life cycle of MOOC, how we can develop the course, how we can develop the e-content for, and how can we launch our courses on the national platform like as Swayam, NPTEL, and you have also described the opportunities of funding
how can we got the funding from different funding agencies like as UGC, AICT and CEC. So on behalf of Malvi Mission Teacher Training Center, Sant Gadge Baba, Amravati University, I extend my sincere gratitude to Professor Suhas Pachpande sir for giving us a clear-cut roadmap and strategy to develop the courses. Sir, it is very essential in today's era to develop n number of such kind of courses. Yes, there are some kind of difficulties with regards to fees and the courses development, but that should be in couple of days or in couple of coming time, that should be resolved by the authorities member, because the UGC is very serious with this issue, and within couple of days, I think in the month of March, first week of March, the Honorable Chairman of UGC has conducted a meeting, not only meeting, an interaction webinar with all the stakeholders of HEI with regards to implementation of SWAYAM, and this is very big query that has been identified by identified by all the HEIs with regards to fees of SWAYAM for the examination. So in couple of days that will be resolved, and we will not discuss more about the mechanism that will become with the SWAYAM, because there are a number of provisions, but that is now in talk on it. But definitely the government of Maharashtra is also working on that, and they will come up with some kind of policy. So once again, I express my sincere thanks to Professor Suhas Pachpande sir for being with us, enlighten us and motivate us towards the development of courses. I am also thankful to all the participants for patiently listening and interact and take the active participation in interaction and asking the question answer session. So with the kind consent of Professor Suhas Pachpande sir, I would like to declare that this session will be over here. Thank you everyone, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Participants, there are a couple of instructions, so I would request you please stay back for 5 minutes. Hello participants, there will be as per our directive of UGC, and the part of this course, there will be one assessment quiz that I have already posted through email, and I will send it in our WhatsApp group. Okay, and this assessment quiz or the test